Thank you. Hello friends, myself Bhushan Patil, UPSC coach. Welcome you on the behalf of the Unique Academy Pune. We have just started UPSC Prelim Test Series, and in UPSC this Prelim Test Series, this was our first test, and after this first test, we are taking discussion of this test immediately after this test, and this discussion is available on both the modes, okay, offline and online. It is available on YouTube Live. So here purpose is to know all students about the question pattern, the type of test series we are conducting here, okay, and to know about which type of skill sets are required to solve questions in UPSC Prelim examination. So here first hour of this discussion, okay, I will discuss quality question, and in the second hour, in the second part, our next teacher will discuss geography question. Now onwards, every test will be discussed by two faculties, as it is mentioned in our that UPSC or our website or even schedule. It is mentioned that two teachers will take discussion of this test. So before starting, in just 5 minutes, I will give you a brief idea about the test schedule, the type of questions which come in the examination. Okay, then from actual UPSC examination, previous year UPSC question paper, I'll give example of 3-4 questions where logic is applicable, where intuition is applicable. Okay, after that we'll start discussing our questions. So here this is available for both the batches, for English medium batch and Marathi medium batch, as well as it is live on YouTube. So I will be speaking in bilingual, means English as well as in Marathi. So at least some words I will use in Marathi. From next time, we are trying to give you question paper in English and Hindi version. This time also this is available, but it is given only to few students. Okay, but we will give question paper in both the languages, so that it will be easier for a Marathi medium student to solve that question paper. Means it will be like actual UPSC question paper. Let's start now. Let's continue. So here you can see, first of all, the schedule. This is our UPSC test schedule. In brief, I will give you an idea about this test schedule. There are 26 GS tests. You can see here on the board 26 GS tests and 5 CSAT tests. So there will be 26 plus 5. Okay, total test will be 31 tests. Okay, 31 tests are available here, and this test series is available in online and offline mode, but I will request student to attend it in offline mode, because there are various advantages of offline mode. I will explain those advantages also, because in actual UPSC examination we will give that exam in the classroom. That's why classroom strategy is also extremely important, because the type of stress we feel, type of difficulty comes in the classroom, everything actually that you will learn, those skill sets, that mindset you will develop when you will give this test in the classroom. That's why those who want to join it, from those students also, I will advise you that you join it on offline mode. So offline mode teachers will be available here. Sort of, it will be mentoring also. After that also you can discuss with teachers your specific problem. You can discuss with teachers. So here these are the 3 phases. So first phase is NCERT based phase. So 2 tests, first 2 tests, they are NCERT based. You can see this. This was our first test, and second test will be on 26 November. That is on NCERT, purely on NCERT. So purpose is just to give chance to student to revise their NCERT material, because all questions will not come from NCERT books, but NCERT is the basic foundation of your prelim preparation. Okay. After that, this test series is divided into 2 phases. First phase, that is the basic difficulty level, and second phase, that is advanced difficulty level. Now, why we have divided this test series in 2 phases? Because in basic difficulty level, we will try to cover conceptual questions, basic questions. Sometimes those questions may not be directly, or similar question may not be asked in the actual UPSC examination, but it will cover almost
all topics from each subject. Okay. And similarly, second phase is advanced phase. And each phase is divided into 2 subjects so that you can revise 2 subjects at a time per week. And plus current event will be there month-wise. So this will be our schedule. And one specific thing I would like to mention here, you can see test number 10. It is about the miscellaneous GK test, and plus science and tech is added here. So what is the miscellaneous question, miscellaneous type of question? You see question paper, in question paper, polity, geography, in this way we can divide, but some question you cannot categorize. You cannot categorize that this question is on polity or economics or geography. There are overlapping of this question. So to understand miscellaneous type of question, this special category is important, because in the classroom all over in India, it is difficult to teach about a miscellaneous question. So what is meant by miscellaneous question? We'll try to cover different areas which do not come under particular subject, or it comes on the overlapping of the subjects. That is a specific category included in this test 3. Now after this, I'll tell you the type of question which come in the examination. You can see the length of the question paper, that is also extremely important. So these are almost 8 type of questions. Now here analysis is from 2018, 19 and 20. 21, 22, this is similar analysis. Just to make it simple, म्हणजे साधं तुमच्या समोर मला प्रेझेंट करता आलं पाहिजे, समजलं पाहिजे, म्हणून हे फक्त 3 वर्षाचं प्रेझेंटेशन दिलेलं आहे. You can see a question type. 2 statement question, 3 statement question, नंतर 3 statement 1 2 3 असतात, खाली ABCD दिलेले असतात. You will see type number 3 and type number 7. These are the 3 and 4 statement question. Okay, you can see here 3 28 question and 7 70 question. Okay, so these are almost 45 question out of 100 question. So 45 question out of 100 questions are asked on 3 statement and 4 statement question. Means 45% question paper is this type. So we should be used to of this type. And you can see simple ABCD type of question with category number 4 and 5. Almost 40 questions in 2020. Almost 40 questions are asked on simple ABCD type. But this is not only simple ABCD. Okay, here ABCD small statements and ABCD long statement. In this way, it is divided in 2 parts. I'm telling you analysis of actual UPSC question paper. Up to this detail, we analyze it, and you shall analyze it. Okay. So here also we are trying to maintain length of the question paper. म्हणजे क्वेश्चन पेपर जो असेल तर number of words are there. So on average, we are trying to go closer to it, because time management is extremely important. In actual examination, many students feel problem in managing time. Okay, then so this we are trying to maintain. This is just give an idea how question paper or how questions are asked in actual examination. Then proportion also you might know. So this is on an average proportion of questions. On an average, plus minus. It is not exactly. Suppose I will use simple example in Indian polity. 13 questions are there. So in actual comprehensive test, so 13 questions, sometimes there will be 11, sometimes there will be 17, 16, sometimes there will be 8, 9 only. In UPSC examination, this varies. But on an average, this is a proportion in actual question paper, actual UPSC question paper. So that also we'll try to maintain here. Now, in UPSC question paper, when you solve questions, okay, you need different logic, different skill sets. So which skill sets are important here? Whenever you clear a particular examination, it is not that you will clear that examination only on the basis of knowledge. With knowledge, what you need? Conceptual clarity, knowledge, information, I will categorize only in one actually type. So here, to get success in any field, certain factors are important. I will write these factors here. So here, success, first motivation is important, then knowledge is important, then skill sets, they are also extremely important. Then the environment, or we can say the system in which you work,
all these factors, okay, means whether conditions are favorable or not favorable. So all these things are important in your success. So only knowledge, information means you are just reading book, you are just reading Lakshmikant, you are reading History Bipin Chandra or that Spectrum Guide, you are attending classes, getting knowledge, information, only that will not help you here. In prelim, specific skill sets are important. Okay, I may take another one lecture on skill sets on prelim examination, that may be on the YouTube live. Okay. So here I will give you just short idea that logic is extremely important in prelim examination. That also we'll see now. In all test series, question may not be of that type, but we shall discuss questions such a way that instead of information, whether we are applying logic, I will show you that type also here. Then we shall be able to recall information. Manan. How to recall it? Then to retain information, we shall use mnemonics technique. Then sometime we know the answer. We say answer is B, Bombay. Answer is C. But why that answer? We don't recall. We don't have conceptual clarity. We don't have logic to it. But we say this is answer. Because that is coming from your inside. I'm calling it intuition. Right? And later on you see that answer is correct. But what happened? We say ki अरे यार मला वाटतं हे आन्सर करेक्ट आहे. आपण डोकं लावायला जातो आणि चुकीचं करून येतो. लॉजिक जिथे इंट्युशन वर सॉल्व्ह करायचा पेपर तिथे लॉजिक लाव. नंतर म्हणतो की नाही सर मला माहित होतं उत्तर बरोबर होतं पण मी तिथे काहीतरी लॉजिक लावत बसलो आणि आलेलं चुकवलं. How to believe on your intuition? How to believe on your subconscious mind? That is also practice. Regularly when you will solve your test series here, I will give you another exercise that while solving question, you will mark on question paper. That question you are solving is whether it is on knowledge base, information base, logic base, intuition base, and you will see your intuition based questions are correct. Suppose you have solved 15 questions on the intuition. Out of 15, how many questions are correct? Logic based, how many questions are correct? Then you will see probability, whether you can take risk or not. And you will develop that practice of taking risk in actual question paper. Because how many questions to solve in actual question paper? Many students are confused. Some say 75, 80, some say 95. आपल्याला तो अंदाज नसतो. And in actual exam hall, to develop that confidence, to decide it on time, it's difficult. Okay, so that practice you can do in the classroom. So here I will give you example of some actual UPSC questions. Okay, only 5 to 6 questions I will take here, and after that we will discuss our own question paper. Suppose here question number 1. This is 2022 question paper. It is in front of you. So here I will not discuss answers, but I will tell you how to approach question paper. Here our discussion will be based on telling you approach of question paper, because a detailed answer sheet will be provided you. We'll provide you detailed answer sheet on our Google Classroom, on our Telegram official channel. Okay, so detailed explanation of all questions are given there. We are trying to maintain accuracy, but it's a question paper. Sometimes 1 or 2%, maybe some we can say variation. It depends. Okay, we are trying to give you 100% accurate information. But we are also human beings, so sometimes some maybe printing mistake, some proofreading slightly, that may be possible, but we are taking due care. So this question was on the rapid financing institution and rapid credit facility. Okay, so these are applicable to which of the institution? So how to approach this type of question? When you are preparing for prelim examination, studying all PYQs of prelim examination, it is extremely important. So I will be slightly speedy here because we want to discuss more questions. We want to see some logic also. Okay, आणि संपूर्ण 100 क्वेश्चन डिस्कस करणं शक्य नाहीये. That's why we have decided to discuss polity and geography question. Other information is available, or that explanation is available in the answer sheet. And always out of 100, 60, 70, 80 questions we will try to discuss. Okay, that logic is ज्याच्यावर तुम्हाला you can develop your skill sets. So here you can see. So here IMF, World Bank, this is one type of category. Here first of all, odd man out. Odd man out is United Nations. This is odd man out.
As a general student, I don't know information. So I will eliminate C first. Then Asian Development Bank is a pillu like World Bank or below of World Bank. Right? It's an Asia specific. आणि IMF आणि वर्ल्ड बँक दिलेलं आहे. तो प्रोबॅबिलिटी बघा विचार कसा करायचा ते आपल्याला शिकायचंय. म्हणजे instead of actually spoon feeding, I'm teaching you that fishing instead of giving you fishes, right? तर इथे काय जनरल कॅन्डिडेट we can think की इथे IMF वर्ल्ड बँक दिले तर पॉसिबिलिटी इज दॅट आन्सर माइट बी फ्रॉम दिस, राईट? आता वर्ल्ड बँकचे आपण वाचतो ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड बँक दिस प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड or suppose this metro rail corporation is funded by this one, okay, this typical facility for upliftment of particular section, it is funded by World Bank. So World Bank, that is related with development project most of the time. It gives loan for development things. मग IMF असू शकतं का? मग आता काय करायचं, whenever you are studying, these are the PYQs. You must know the purpose in brief of all type of institutions. म्हणजे काय करायचं, मॅक्रो टू मायक्रो स्टडी करायचं. मॅक्रो टू मायक्रो. ओके, म्हणजे युनिक अकॅडमी काय करतं, हा मग ते PSI ची की कुठेतरी बॅच घेतात असं नाहीये. युनिक अकॅडमी इन कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम सेंटर, फर्स्ट पार्ट. सेकंड UPSC MPSC PSI स्टेट एक्सेट, म्हणजे मॅक्रो टू मायक्रो. जर कुठली इन्फॉर्मेशन घेत असताना मॅक्रो टू मायक्रो जायचं. आपली वाईट सवय असते, आपण मायक्रो टू मॅक्रो जातो. पुण्यामध्ये 2 वर्ष राहतो, पण पुण्याबद्दल आपल्याला एरिया विचारलं तर ज्या एरियात राहतो तिथलं एक दुकान माहित असतं, पण कोथरूड कुठल्या साईडला आहे ते माहित नाही. पिंपरी चिंचवड कुठे असतं ते माहित नाही. If someone is asking about the Pune city, you must know the map of Pune city, overall regions, areas. Same is in material content. तर मॅक्रो टू मायक्रोच जायचं. मायक्रो इज इम्पॉर्टंट. ओके, इन दिस वे यू विल प्रिपेअर दिस क्वेश्चन. सो वर्ल्ड बँक पर्पज, IMF, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, तुम्हाला कोणी विचारलं तुम्हाला 2-3 वाक्यात सांगता आलं पाहिजे. क्रक्स तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. ओके, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन फर्स्ट. देन क्वेश्चन नंबर 5. I have selected some question. Then we will go on the next time. We will give you question paper like this, English and Hindi. Question 5. You can see this previous year question paper. Here advantages of inflation index bond, that is R. Advantages of inflation index bond. Now here you can see option number 2. IRB provides protection to the investor from uncertainty regarding inflation. So the statement number 2 is related with the advantages of inflation bond, inflation index bond. म्हणजे बॉन्ड असे काहीतरी असतात, आपल्याला सध्या काहीच माहित नाही असं अझ्युम करायचं. हे बॉन्ड असे काहीतरी असणार आहेत की ते इन्फ्लेशन ऍडजस्ट करतील, राईट? जसं आपण म्हणतो ना गोल्ड वी यूज फॉर हेजिंग पर्पज. म्हणजे जसं जसं महागाई वाढत जाते त्या प्रमाणात गोल्ड वाढत जातं. गोल्डमुळे पैसा नाही वाढत. ओके, गोल्ड म्हणजे फक्त हे सॉर्ट ऑफ हेजिंग पर्पज. इट इज यूज फॉर हेजिंग पर्पज ऑल ओव्हर द वर्ल्ड generally. So here 2 will be correct. First माहित नाही, फर्स्ट तो कन्फ्युजन आहे, कुपन रेट वगैरे काय हे आपल्या डोक्याच्या बाहेरच आहे. सपोज थर्ड वन, the interest received as well as capital gain on IRB are not taxable. हा नॉट मुळे बघता बरोबर म्हटलं की दिस इज रॉंग, मला माहित नाहीये, I don't know the answer, but I said this is wrong. Why? Because I know overall logic that tax free instrument like your provident fund, insurance, only some instruments are tax free. Okay, then some concession in taxes on the home loan interest and your principal. कारण सर्वांनी घर घ्यावे सरकारला वाटतं, बरोबर आहेत ना? सर्वांनी प्रॉव्हिडंट फंड वगैरे घ्यावे, सर्वांना म्हणजे सरकारला वाटतं. इन्शुरन्स काढावा, हेल्थ इन्शुरन्स काय काय जे असेल आपलं लाईफ इन्शुरन्स, सो दॅट देयर विल बी सोशल सिक्युरिटी इन द सोसायटी. Only at these places government will give tax concession on any type of interest income that is taxable, because that income is also limited, 1.5 lakh rupees. That limit is there. I will not go in detail, but a common sense here ki 3 will not be the thing. So answer will be either 2 or 1 or 2. Okay, so here only 2 is not answer, so 1 or 2 will be the answer. 1 we don't know. Despite with not knowing option 1, we can reach to the conclusion, we can reach to the answer.
तर इन दिस वे यू ट्राय टू डेव्हलप लॉजिक टू क्वेश्चन. म्हणजे बघा मी तुम्हाला काय सांगतोय तो पर्पज लक्षात घ्या. आपल्या बाकीचे क्वेश्चन डिस्कस करत जाऊयातच आपण. पर्पज काय की कुठलाही क्वेश्चन समोर आल्यानंतर मला माहिती आहे माहित नाहीये, फक्त ह्या क्रायटेरियावर सॉल्व्ह नाही करायचं. One very good statement I will tell you here. Nowadays questions are coming like puzzle. We solve puzzle, right? We don't give answer to puzzle. We know this answer or we don't know this answer. याचं नाव श्याम आहे की नाही आहे मला माहित नाहीये, पण मी म्हणू शकतो त्याच्याकडे बघून की अरे हा युरोपियन दिसत नाहीये. लॉजिक आहे त्याला की कलर जे असणार आहेत युरोपियन आपले काहीतरी 6 फूट उंच असणार, कलर वेगळा असणार, सॉर्ट ऑफ लॉजिक लॉजिक इज देअर. सो मग याचं नाव श्याम असेल का? असू शकतं. पण डेव्हिड ऑसबॉर्न असू शकतं का? असू शकतं. पण एक जनरल लॉजिक लावतो ना आपण. तर ट्राय टू अप्लाय लॉजिक बिकॉज क्वेश्चन्स आर कमिंग लाईक पझल अँड वी सॉल्व दोज पझल. मी का सांगतोय? बिकॉज वी डोंट डेव्हलप दॅट हॅबिट. We solve question on the basis of only on our study, information, knowledge. We know it, we don't know it. अरे हे तुम्ही बघितलेलंच नाहीये. Leave it. Leave it. असं नाही करायचं. क्वेश्चन समोर आल्यानंतर त्याच्यावर विचार करायचा. कारण हा क्वेश्चन तुमच्या समोरच आहे मागच्या वर्षाचा. काही माहित असताना आपण सॉल्व्ह करू शकतो. Then again question number 7. You can see here. Which activities constitute in real sector in the economy? Right? So here two things are clear. When I saw this question, don't know the answer. So here, option number 1 and 2, farmer harvesting their crop and textile mill converting raw cotton into factories. This is one category. Option number 3 and 4, that is related with finance. 1 and 2, you can see it is related with producing something, right? They are producing something. And 3 and 4 बघा, commercial bank lending money to trading companies. पैसे एका हातातून दुसऱ्या हातात द्यायचे. Then corporate body issuing rupee denominated bonds overseas. म्हणजे फायनान्स रिलेटेड आहे 3 and 4, राईट? येस और नो तो म्हणत चला. गुड. ऑनलाईन स्टुडंट वाटलं पाहिजे वर्गात स्टुडंट आहेत. ऍक्टिंग नाहीये, इट्स अ रिअल क्लासरूम. फक्त मी स्पीड थोडं वाढवलेलं आहे कारण की आपल्याला जास्त डिस्कस करायचंय म्हणून. त्यामुळे थोडं काही लोकांना स्पीड जास्त वाटेल. ओके. So here, what I thought, बघा क्वेश्चन सॉल्व्ह करत असताना डोक्यात काय थॉट असतो आपल्याला त्याच्याबद्दल विचार करायचा आहे. What I thought, don't know so much information. Either answer will be 1, 2 or 1, 2, 3, 4. दोघांपैकी म्हटलं एक आन्सर असणार. कारण या कॅटेगरी जे असतात मग सर्व असेल किंवा 2 कॅटेगरी वेगवेगळ्या आहेत. पण मग आय थॉट की 1, 2, 3, 4 हे कुठे मॅच होत नाहीये. सेक्टर मीन्स फायनान्स सेक्टर माइट बी डिफरंट and you are producing something that might be different. रिअल वर्ल्ड काय होत असणार आहे? रिअल काहीतरी करतायत. जसं की शेअर मार्केट, मनी इज इन्व्हेस्टेड. सम पीपल से की शेअर मार्केट व्हॉट यू आर डुइंग, यू आर नॉट प्रोड्युसिंग समथिंग, यू आर ट्रेडिंग. कंपनी actual will rise or not rise, don't know. But here suppose we are 2 person, we are trading that share. He I am purchasing at 10 rupees and selling him at 12 rupees. काय प्रोड्यूस काय करतो? काही नाही. प्रोड्यूस करणारे बिचारे करतातच आहेत. पण काहीतरी इकॉनॉमीला काहीतरी होतं, आम्ही जर खेळ खेळत असतो. 2 कॅटेगरी वेगळ्या आहेत ना. तर त्याच्यावरनं इथे लॉजिक देता येत होतं. देन हा ठीक आहे, आपण थोडा क्वेश्चन कमी करूया. 11 नंबर क्वेश्चन विल टेक 11 नंबर क्वेश्चन. नाउ हियर दिस क्वेश्चन वाज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. So first of all, you can see statement first and statement 4. Statement first says there is a particular committee and on the basis of that particular committee, contempt of court act was passed in year. So it is possible कि UPSC will change committee name, UPSC will change year. It is possible, but इतको दिले ऐसा अर्थ there is a possibility of enactment. Okay, they are giving year, they are giving that name of committee also. म्हणजे it is possible कि law is there, act is there. UPSC will change either committee name or year, or we will keep it as it is. I saw option number 4. What it says? In India, Parliament is vested with power to make laws on contempt of court.
Don't you think the statement 1 and 4 are related with each other? Right? Because to whom actually or who will give power to parliament? Obviously constitution. Without that, parliament cannot enact that act. So statement number 1 and 4 are related, right? So I thought statement 1, 2 means 1 and 4 is 100% correct. 1 might be not correct. Committee name may be changed. But 4 is 100% correct. Then I thought option number 3, Constitution of India defined contempt and criminal contempt. So first of all, Constitution gives guidelines. This is the basic principle. Everything, even though we say our Constitution is the lengthiest Constitution, it doesn't mean that all enactments are included here. Because there can be so many things in the contempt of court, right? According to situation, also something may evolve, may be included into the enactment. So here broader guideline will be there, authority will be there. Constitution defines authority. Constitution do not define generally the detailed things, right? So those things develop. But like here, the Constitution of India cannot define civil contempt and criminal contempt. These are the smaller things. These details, such minute details, cannot be given in the Constitution. Don't know. वाचलेलं आहे का नाही हे लक्ष्मीकांत आठवत नाही, नोट्स आठवत नाही, काय आठवत नाही आणि खरंच नाही आठवत इतकं. इतकं सगळं शिकवतोय तितकं डिटेलिंग कोणाचंच पार्ट नसतं. म्हणजे याचा अर्थ हा ऑप्शन नव्हता. म्हणजे काय की फर्स्ट आणि 3 तर करेक्ट आहेत. मग आता फर्स्ट आणि 4 फर्स्ट अँड 4 हे दोघं करेक्ट असू शकतं. फर्स्ट अँड 4 आन्सर नाहीये. 2 Constitution of India empowers Supreme Court and High Court to punish contempt of themselves. We always know की फॉर कंटेम्प्ट म्हणजे काय, अपमान झाला मी तुम्हाला शिक्षा देणार. Obviously this right is available with judiciary, higher judiciary. So authority is given by the Constitution. So by logic, the statement 2 is correct. So this question also we can solve on the basis of logic, even though we don't know information. Sometimes conceptual clarity. त्यामुळे ज्यावेळेस तुम्ही अभ्यास करतात, वाचतात, तो फक्त प्लेनली नाही वाचायचं. यू आस्क क्वेश्चन टू दॅट स्टेटमेंट, यू आस्क लॉजिक टू दॅट स्टेटमेंट. व्हाय इन दिस वे द स्टेटमेंट इज रिटन हियर. ओके, नाउ हियर लास्ट वन. यस, क्वेश्चन नंबर 50. मी अगोदर मुद्दा मार्किंग करून ठेवले टू मेक इट सिंपल, टू सेव्ह युअर टाइम. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग are exclusive power of the Lok Sabha? So here, to impeach the President of India. So you can see this one, to impeach the President of India. So here, why third cannot be the answer? Why third cannot be the answer? Exclusive power to impeach the President of India. Any one of you? And I want logic. It is given in the book. Don't tell me that thing. I want logic. Just raise your hand and explain. Yes. ओके ओके, ठीक आहे. पण मोर करेक्ट लॉजिक असं म्हटलं तर डिस्कंटिन्युएशन ऑफ इमर्जन्सी, दॅट राईट इज गिव्हन ओनली टू लोकसभा. इट्स इम्पॉर्टंट थिंग, बट देयर इज अ लॉजिक टू इट. हा, तेच होतं, ते लॉजिक डिफरंट आहे. आणखी काय लॉजिक? ओके, फेडरल सिस्टम असल्यामुळे प्रेसिडेंटला कळायचा अधिकार हा राज्यसभेला सुद्धा असला पाहिजे. करेक्ट. व्हॉट एल्स? सिंपल थिंग. इफ इट इज गिवन टू लोकसभा, so president will become plaything in the hand of government. Government has a majority in Lok Sabha. Already some people say, critics says president is like rubber stamp. Even though there are veto powers to president, certain discretionary powers are there too. Means even though situational discretionary power, but situational discretionary powers are there to the President of India. The simple thing ki if it is exclusively given to Lok Sabha, then President will become plaything in the hand of the government. म्हणजे मग गव्हर्नमेंटला जसं वाटेल तसं प्रेसिडेंटला ऍक्ट करावंच लागेल.
त्यामुळे असं होणं शक्यच नाहीये. इफ यू आर रायटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू आर रायटिंग प्रोव्हिजन, सो वी विल नॉट राईट लाईक दिस. तुम्हाला माहितीये का माहिती, डझंट मॅटर, लॉजिक इज दिस वन. सो हियर इट कॅनॉट बी एक्सक्लुझिव्ह राईट ऑफ द Lok Sabha. That one thing you can eliminate. Okay. So in this way, actually, you solve question, you give logic, you develop logic to different questions. Don't solve questions only on the basis of information. Now let's discuss our questions. Got it? The skill set. This question papers, no one can compare their question paper with actual UPSC question papers. So this was relatively simple, straightforward question paper. Purpose is that you will understand the basic things. Yes. See on the board, you will get detailed answer sheet. Okay, just look at here. काही मार्क करू नका, काहीच करू नका, सर्व तुम्हाला इमिडिएटली आता ग्रुपवर आलेलं असेल. डिटेल आन्सर शीट ग्रुपवर आलेली असेल. So here you can see which of the following individual freedom are integral part of the Indian Constitution. Shows its liberal character. Okay, liberal character. So here it is about the fundamental rights, right? So here freedom of expression, freedom from arbitrary arrest, and freedom of conscience. What is happening nowadays? UPSC is not asking you question directly on the statement given in the Constitution. Reading between the lines, they are asking some terms which are used in the standard books. That they are asking. I will show you similar type of statement also. Like previously 2-3 years back, one question was asked: which of the following are part of the rule of law? And indifferently, those words were mentioned, even though we know meaning. So the logic was actually necessary there to apply that meaning to those statements. So here, the freedom of expression is mentioned under Article 19. Then Article 22 is there. Freedom of conscience. Now, freedom of conscience is the first principle, or we can say first right in the right of religion. Okay, fundamental right of freedom of religion. Freedom of conscience, internal right of your internal religious right, conscience, belief, and then another is expression. So it's a basic keywords terms we must know. So here, conscience is exactly what that word. Sometimes this word internal freedom is what that you can find out. So here 1, 2, 3. This is option answer. Second, secularism in Indian Constitution. Now here two books are important. What I will share on the group. Another is Indian Constitution at Work. This NCERT book, 11th class. It is extremely important. I am saying extremely important. Even though you have given 2 prelims, your score was 86, 87, and you missed the train just by 3-4 marks. Even though you have read Lakshmikant book for 4 times or 10 times, it doesn't matter. Doesn't matter. Indian Constitution at Work, you must read. Why? Because sometimes questions directly come from there. Now I don't have time, that's why I cannot show you here. And the way it is presented, that is really nice. Another book, actually I don't remember the exact name, but I will share on the group. 2 years back, which of the following are meaning of freedom or democracy? हे जे क्वेश्चन आले होते ना, त्या पुस्तकातनं जसेच्या तसे ते क्वेश्चन उचललेले. That is also basic book. नंतर आपण गुगल करतोच, त्या गुगलला काही अर्थ नसतो. तर these books, 2 books, you must read. Okay, and after that your notes. And do not go in detail of Lakshmikant book. कारण ते वाचणं कधी complete होत नाही. Instead of that, you can prepare your notes or refer some notes. Okay, so here it is secularism. It has adopted the Western concept of secularism, means mutual exclusion of state and religion. Actually, this mutual exclusion of state and religion, it's a Western country's concept of this secularism. In India, secularism includes 2 things. That is actually equality of community. In equality of community, why? Because we don't have all communities equal. That's why we give rights to some communities, like right to establish their educational institution, so that maintain their status, to uplift their status, etc. And second, even though we are a secular country, but we interfere in religion.
at certain places. It's not like Western concept. In Western countries, to protect individual liberty, state will not interfere into religion, religious affairs, and state will not run on the basis of religious, we can say those facts or provisions or belief system. But in India, I'll give a simple example. Like suppose untouchability was there. So in the constitution, there are provision against the untouchability, right? Someone may say that it is against the religious provision, or suppose the case of Shabrimala, giving equal chance or equal right to men and women to pray or to visit particular temple. So here government may enact a law, government may issue directions. So Western concept of secularism is different and our concept of secularism is different. Detailed discussion you can see in Indian Constitution at work. Then freedom of religion in India means freedom of religion of both individual and communities. Just now we saw right of religious consciousness, individual right, religious denominations or educational institutions, community rights. So both individual and community rights are there. India, state may help or hinder religious communities depending upon which mode of action promotes values such as freedom and equality. This one मैं explanation देता हूँ. So this is the Indian type of freedom of religion and secularism. So this statement is supportive to the Indian type of secularism. So in regular book actually you will just find facts. This type of information, this type of explanation you will not get in regular that Lakshmikant book. That's why NCERT, that is important to understand the statement. It is important. Then you can see democratic countries need a constitution. What? Why? Because these are the meaning of the constitution. Constitution defines the limit of the government. Constitution is the source of the government. Constitution defines the relationship between state and the citizens, means define the right of the citizens. Okay, so these things are given here. Third statement, in the constitution, directive principle of state policy, they are given, means bring social change in a peaceful manner. How we can bring it? That is also given. Certain things, again, your right, they are mentioned in the fundamental right. So there will be a social change in the society. So these are the basic purposes of the constitution in democratic countries. Few years back, two questions were asked. Constitutional government means which type of government? Means whether it's a limited government. This was the answer there. So that was the crux of this type of question. And that question was repeated. Means twice that question was asked in the gap of 2 to 3 years. Okay. Constitutional government means what? I know some student actually they mistakenly or they misinterpreted it and had marked another or the wrong answer. This is the basic test. The Constituent Assembly, which constituted Indian Constitution, was composed on the plan proposed by Cabinet Mission Plan. Mistakenly in the answer sheet that is the D, but here answer is C. Okay. Just make it correct. Answer is C. It's a Cabinet Mission Plan. All these plans are important. This question can be asked in history as well as in the polity part. Then another thing can see which of the following statement is correct about Constituent Assembly. The basic thing about Constituent Assembly are given here. Now India was made up of two parts for independence. British provinces and princely states. Right? There were British provinces and princely states. So British provinces and princely states both were represented in the Constituent Assembly. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्ली जी आपली कॉन्स्टिट्यूशन तयार करणार त्याच्यामध्ये मग रिप्रेझेंटेशन फक्त आपण ब्रिटिश प्रोव्हिन्सेसला दिलं असतं. व्हॉट अबाउट द पीपल हु आर लिव्हिंग इन द प्रिन्सली स्टेट्स? वी वॉन्टेड टू डेव्हलप अ डेमोक्रेटिक स्टेट. That's why representation from all over the state nation that was necessary. So here first part
all members of the Constituent Assembly were indirectly elected. That is wrong, because not all members, only member from the British provinces, right? And from the princely states, they were nominated. So they were indirectly elected and nominated. So question is slightly twisted. Then princely states were not represented in it. मग कदाचित ज्याचा कन्सेप्ट रॉंग आहे तो फर्स्ट आणि सेकंड करेक्ट करू शकतो. Okay, so here that is also wrong. Then Constituent Assembly made for the first time on 9 December factual information generally not asked, but after 2-3 years, 5 years, this type of statement is asked by the UPSC examination. 3 or 4 years before, detailed provision of 1813 Act, 1813 Act were asked. They were not given in Lakshmikant Googles. आता कदाचित ऍड केले असतील, त्याच्या अगोदर दिलेले नव्हते. ओके, त्याच्या अगोदर दिलेले नव्हते. ओके, so here that is correct, and constitution was adopted, okay, and came into force. These are the two things. Okay, adopted on 26 November and came into force 26 Jan 1950. So deliberately the simple question, just to start with the basics. Then preamble. The best way to solve any question on preamble in the prelim examination is to know preamble completely. That's it. Just डोकं लावायचं नाही. Mains examination question on preamble will be different. Like under the liberalization, privatization, globalization era, which principles, which ideals in the constitution or in the preamble we can implement or restricted, etc. Sort of question will come in the main examination. But in preamble, what question come? Arrange the following ideals in the preamble in chronological order: sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Simple logic ठेवले. Secular balance करायचं. Secular मध्ये येईल. Start from sovereign and democratic republic. हे पाठ झाले. मग एकदा ती chronological order विचारतात. Which words are added by the 42nd Amendment Act? That question comes. Or the justice, which type of justice? Then status, which type of status, etc. The preamble part असले की संपला विषय. आणि preamble वर क्वेश्चन हा अल्टरनेट इयर का विना किंवा सारखा येत असतो. साधी गोष्ट आहे, जशी प्रार्थना पाठ असते, राष्ट्रगीत पाठ आपलं पाठ असतं. प्रियम्बल आपली पाठ असली पाहिजे. किती लोकांची प्रियम्बल पाठ आहे? जस्ट रेज युअर हँड. Okay, not even a 10%, not even a 10% in the class. So this is problem. Okay, म्हणजे आपण काय करतो माझा तिथे माझा हे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी म्हणजे कसं असणार ते बघूयात पुढे. So here socialist, secular, these words were added by the 42nd Amendment Act. The original constitution only sovereign, democratic, republic, these words were given. Then here again about the preamble. It is another one. Just let me see whether it's continuing. Okay. So here it is amended twice. It is amended only once. Okay. आता आपल्याला काय माहित असतं? Amended preamble. Preamble was amended. Now, sometimes question may be twisted whether a preamble is a part of the constitution. Is it part of the constitution? That's why it is amended. Logic to it. Okay. Mata amended is, it is not like constitution which is amended many times. About the preamble only once it is amended. Okay, not twice. It ensures social, economic and political justice. बघा जर पाठ नसेल मी क्वेश्चन सेट करून कन्फ्युज होतो. कारण कसं असतं पाठांतर नसतं, बाकी सर्व बकवास असतं. लोक सांगतात नाही पाठ होतो वगैरे, असं नाहीये. We already म्हणजे बॅच मी सांगितलं, I am telling you, explaining you this on the basis of experience. I mean this field since last almost 15 to 16 years. In my own because preparation, I never disqualified in prelim examination. Never. I have done all my examinations to interview. I know how to apply logic, and always I teach this type of things. Skill sets, they are extremely important.
how to approach particular examination. There is a way to approach it. Okay. So here social, economic and political justice. आता हे it ensures social and economic equality. Apparently हे वाक्य बरोबर वाटतं वाचताना. मग आपलं जर पाठ नसेल आपण कन्फ्युज होतो. असं येईल का नसेल, असं येईल का नसेल. Then it ensures equality of status and opportunity. So justice मध्ये काहीतरी ते अप्लाय करू शकतात, स्टेटस मध्ये अप्लाय करू शकतात किंवा लिबर्टी मध्ये थॉट एक्सप्रेशन स्पीच फेथ एक्सेट्रा नॉट स्पीच. ओके. तर ते त्याच्यावर यूपीएससी प्रश्न विचार. सिमिलरली दिस क्वेश्चन हियर. Then you can see another question: which of the following statement is correct about fundamental duties? So knowing all fundamental duties, that is the advanced study. First of all, the background of fundamental duties, that is the basic study. Right? So whether I am from India, then I am from Maharashtra, from where Marathi बोलतो ना महाराष्ट्र असणार आहे. Right? So here, it was part of the original constitution. Then it was added by under advice of which committee? Okay. So that information comes with it. Then they are contained under Article 51. आता ये आर्टिकल का कारण की आर्टिकल 50, 51, 51A, these are important. You see PYQs, you will find question on these articles. Now article 50 is related with what? Just raise your hand. How many people know article 50? Just आणि हात असा नाही करायचा, हात असा करायचा. 1 2 3 only 10 to 15. Okay, tell me article 50 is related with what? Independence of judiciary. No. Separation of power between executive and judiciary. Right? You can see PYQs. हे स्टेटमेंट कितीदा विचारलेले आहेत. आपल्याकडे नाही का लग्नामध्ये ते नारळ लावतात जवळ्यांना. आता गेली ती प्रथा, जायलाच पाहिजे. पण कुठल्या अगोदर ती चुलत ते शोधण्यापेक्षा घरचे बघा ते पडत सुटतात. म्हणजे जे असतात ना आपल्याला बेसिक काय, जवळचं काय ते जास्त महत्त्वाचं असतं. प्रायोरिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो दिस आर्टिकल 51A 51 international peace. These are specific articles, and in other articles you must know the names. Moti names you shall know. These are the fundamental duties, these are the DPSP, because sometimes UPSC mixes fundamental duties and DPSP. Prepare mnemonics. I have prepared one story on duties. I know all duties because one story I have. This is called mnemonics. For DPSP also I have prepared story, but that is more complicated. ते लक्षात राहिली तर राहिली, पण ड्युटीची स्टोरी माझ्याकडे एकदम छान लक्षात ठेवलेली आहे. त्यामुळे मी कन्फ्युज नाही होणार. मी रोज ते वाचण्यावर भर नाही देत. मला माहिती मी विसरणार आहे ते, कारण इट इज नॉट इझी टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. Okay, so here, so once they are amended, so yes, they are amended once. Okay, it is related to right to education. Right to education was fundamental right, and after that this was also amended. Then categories of fundamental right, 2 ते 3 वेळेस हा प्रश्न आलेला आहे. There are 6 categories. Previously 7 categories were there. Now there are 6 categories. We must know name of these categories. We must know name of these categories. I can show you that part here also, if it is easily possible. Easily I am getting here in the NCERT book. Give me a minute. Rights in the Indian Constitution. You can see these are the DPSPs. You can see these are the categories. Okay, these categories are mentioned in the NCERT book, and questions are asked on these categories only. It's a macro part.
not a micro part. It's a macro part. मोठा मोठी. Macro part. वडिलांकडचे नातेवाईक, आईकडचे नातेवाईक मॅक्रो पार्ट आहे ना, म्हणजे मिक्सअप नाही. सर मॅक्रो वे. म्हणजे जर तुम्ही 2 वर्ष अभ्यास केलेला आणि हे चुकताय, दिस मीन्स युअर सिन्सिअरिटी. क्वेश्चन इज नॉट ऑन युअर सिन्सिअरिटी. Question is on the way you are studying. Okay, you don't know how to prepare. On which part questions are asked. Okay, so these are the categories. And you will see the questions are asked on those categories also. Right? So here 2, 3, 4. These are the categories: equality before law and equal protection of law. This is the article within the first category of these fundamental rights. Equality rights. Then 10th one, here, no law shall declare any action as illegal from back date. Now there is another word to it. Another that phrase is there, or no post facto law with no retrospective effect. So here, protection in respect of conviction for offences, there are 3 types of rights. No double jeopardy. You cannot be compelled to give evidence against yourself, which will criminalize you. No self-incrimination. And it is third one. So these are the 3 subparts under this article, protection in respect of conviction for offences. Mata हे विचारल्यानंतर काय? When you will revise, you see which are other 2 parts. Why I was wrong here? Whether I don't know the concept. Whether I know those 3 words. Then here again, it is about the rights in the Indian Constitution. Okay. Related with the minority. Minority is not defined in the Constitution. Previous years questions also this statement was asked. Now it is mentioned. Then what is mentioned? Minority status is not dependent only upon the religion in India. It depends on religion and language. Religion and language. And there is a national commission for minority. आता मग हे तर होतं, हे NCERT नव्हतं, पण मी हे मुद्दाम एक added statement टाकलं त्याच्याशी related, just to bring small twist, whether it's a constitutional body or statutory body. So many times you see these are the statutory bodies and some bodies are the constitutional bodies, right? So it is created by the statute of 1992. In here, UPSC, which things are passed or rules are passed by the government to give effect to directive principle of state policy? This question was also asked in the PYQs, and that was based on NCERT. That is given in NCERT. Now this part, this is related with fundamental right. First one. This is related with fundamental right. And nationalization of bank, that is related with UPSC. In detail you can see in the explanation sheet. Okay, so which provisions, which enactments are passed, laws are passed by the parliament, okay, or which we can say actions are taken by government to give effect to directive principle of state policy, that you can learn from there. This type of question comes in the exam. These are given in the NCERT book. Then non-justiciable right mentioned in the constitution. Now here non-justiciable rights means what? It's a DPSP, right? And these are the names of DPSP. These are the names of DPSP. So here all are, we can see, given in the DPSP. Then you can see these are some can say lengthy statement that in a parliamentary system the president is nominal executive head and PM is a real head. Straightforward. The president exercises his or her power with the aid and advice of the COM headed by PM. Straightforward statement. Okay, to have a brief idea, basic level questions put set till after that you can see president can dismiss any minister anytime without consent of the PM. Not without consent of the PM. Because on the aid and advice they are appointed. So for removal also Prime Minister opinion is important. There was a controversy regarding this. It's a wrong statement.
size of the COM is decided by the president. How it can be decided by the president? Because he had known how many ministries, how many departments I want. So it's the exclusive right of the Prime Minister. Prime Minister decide the size of COM. Now there was a constitutional amendment, and by that constitutional amendment, maximum limit of COM is decided or minimum limit of COM is decided. Maximum limit. Okay, 15%. But that amendment, then 15% of what? That will be advanced level of question. Okay. Now here, next question, yes. Okay. Okay, I will discuss it after the session. Okay, because here it's a live session. I want to continue it for the next faculty also. Here, question number 15, you can see the President of India doesn't have a pocket veto power. So first of all, we must know there are type of vetoes. Suspensive veto means what? Absolute veto means what? Pocket veto means what? So they are not directly mentioned in the constitution, but absolute veto means exactly what and for which bills? Means central bill or state bill, that right is available to President of India. Suspensive veto means exactly what? Suspend bill, sending it reconsideration means suspension. Pocket veto means keeping it pocket, doing nothing. So when this pocket veto is used, so these are the advanced things on the basis of this that you can develop. So how that pocket veto, even though it is not directly mentioned in the constitution, president can only use pocket veto power on the aid and advice of the cabinet. It's the against very meaning of veto. Veto power. Veto power means what? Nakaradhikar, right to say no. So here how right the no will be said by the president after taking advice of the cabinet. Then not correct statement is asked here. So this is self-explanatory question. This information you keep in your notebook on NCERT basis. This is important type of government different countries. Sometimes some googly questions are there from the UPSC examination. This is that type of thing. Okay. So no need to explain here, but you shall write all this information in your notes. What type of government or the system is available in Germany, in Sri Lanka, because USA we know. France also, France has a different type of system. France has a different type of system. You see that system in brief. Then here, conduct about the business of parliament. Now here, first of all, removal of the member of the parliament. They are removed by two ways. Disqualification of member of parliament are given or under the anti-defection law. What is the macro thing? Under anti-defection law, decision about the removal is taken by the presiding officer. I think previous year or before it, question is asked for anti-defection law. But that is in one step ahead. So here, in anti-defection law, that decision is not taken by the President of India. That is taken by the presiding officer of this house, either from the Lok Sabha or Rajya Sabha. Okay. So your statement second is wrong, and president officer is final authority in matters of regulating the business of the legislature. Yes, that is correct statement. Then parliamentary committees. So here, first of all, आता थोड़ा difficult झाला खरं तर ह्या level नुसार. First of all, we must know what is function of public account committee, what is function of estimate committee. My simple question: is there a role of estimate committee in passing budget? Those who are saying yes, just raise your hand. Simple question: whether estimate committee has a role in passing budget? Those who are saying no, raise your hand. Okay, yes wale, no, no wale, no. Don't know. That is 80% of the population. And the basic question you can ask yourself: from how many years I am preparing for this examination, how many months, whether I have read these committees, is there any role of connection of CAG and estimate committee? Yes or no? These are the yes.
Okay, no. These are the basic questions. Okay, first of all, you must know departmental standing committee means what? Or departmental parliamentary committee means what? Role of the public account committee, brief. Role of estimate committee, brief. Right? Questions will be on those committees. Here, general question is asked. Committees play important role in law making as well as in the day-to-day business of the house. Like budget is passed on the basis of what? On the departmental committees. They give report. That is a detailed part. Then second, India has developed system of parliamentary standing committee, etc. That is straightforward. Reports and recommendation of committees are not binding on the government. Okay. Your public account committee report, estimate committee report, they are not binding on the government. They are recommendatory type of those recommendations, suggestions. But government takes those suggestions seriously and implement it. This is the tradition in India. Government takes it seriously, but that is not binding. One may say it's the parliamentary, that's why it may be binding. Now, this question simply straightforward question. Okay. So Rajya Sabha represents in India has a similar representation like the Senate in USA. In Senate, there are 100 members and there are 50 states in USA. 50 into 2, that is 100. Every state in USA sends 2 members in Senate. In India, that is in the proportion of the population. Then Rajya Sabha members are elected for term of 6 years and they cannot be re-elected. We know they are re-elected. Present a controversy also you can see. So here, basic structure of the constitution, as usual question. Which one? $90. Okay, we'll discuss it later on. Let's continue this. Let's continue. See, only these 2 sessions are live sessions. After that, there will be discussion in the classroom. Your queries will be solved again. Okay. So here, question number 21. How Indian Constitution has ensured independence of the judiciary? Okay, 1 and 3 statements are correct here. 2 judges have fixed tenure but hold office during the pleasure of the president. Not there is a procedure to remove the judges of the court. Then Parliament cannot discuss the conduct of judges at all. Parliament can discuss the conduct of judges only at the time of removal. See, in the prelim questions, there are always if and buts. There are arguments, counter arguments, sometimes some confusion in the understanding, sometimes in the framing. Okay, so we'll discuss these things in our regular discussion. Only in this first and second discussion that is live on the YouTube. Okay, that's why we just maintain it. Your all queries will be solved. 20 skip kela, ठीक है? मुद्दाम skip केला तो because another teacher is waiting. Okay, he has prepared detailed actually geography discussion or these things. So the teacher is expert in geography ecology part. He will explain you different perspectives. Okay, geography sir will explain you different perspectives. So here you can see judicial review question. So whether and this statement was asked in the examination whether judicial review is expressly mentioned in Indian Constitution or not. So this is not exclusively, or you can say expressly mentioned in the Indian Constitution. This is derived. It is not written as it is that this is the judicial review power. Okay. Then the review power of the Supreme Court cannot extend to laws passed by the state legislature. It's a Supreme Court. It extends to anywhere. Then third one, PIL has further expanded the judicial review process. Yes, it has gone to the judicial activism. It's an extension. Then this question 23-24 on the election process, election commission in India. So here, constituency to be reserved is decided by the delimitation commission. Now you find detailed information about the delimitation commission. Why delimitation commission? Okay. Then when it was formed. So the previous information you can search so that you can solve the advanced questions here. Now here about the election commission.
Chief Election Commissioner and other election commissioner. So Chief Election Commissioner, other election commissioner, they receive similar salary, equal salary. They are provided security of tenure. Okay, not the other election commissioner. They can be removed on the recommendation of the Chief Election Commission. Chief Election Commissioner. That's why statement 2 is wrong here. And in case of differences of opinion among them, view of CSE prevail. You can apply logic here. If view of CSE will prevail, if difference of opinion, there are 3 members only. Then what is the purpose of bringing 2 other election commissioners? 2 other election commissioners were brought during the time of our former election commissioner, let TN Session, right? Just to reduce that authoritative way, election commissioner can work according to the government. So 2 other election commissioners were added. So here by logic also you can say this is the wrong statement. This is straightforward. Okay, simple question. Schedules, straightforward question on schedules. So only few questions we can discuss where logic is important. All schedule you must know 10, 11, 12. The schedules know everyone. 7 schedule know everyone nowadays. UPSC is not asking question on 7 schedule. Even 7, 8, 9, 10, 11, 12. UPSC is not asking question. UPSC is asking question on schedule 4, schedule 5, schedule 6, schedule 2, which you generally don't know. Now here all India services. Now here it's a explanation type of question where you will get an idea about the all India services. To which article deals with it. Now all India services, how they are created on the initiative of Lok Sabha, Rajya Sabha. That's all the question in UPSC PYQs. You can see UPSC PYQs. There that type of question was asked. You can analyze PYQs and you can see exactly what is the focus area of particular topic. Okay, so here all statements are correct. Gram Sabha, only you can see here, its powers have been determined by the central government. When you will see the local cell government, certain provisions, they are mandatory, and other provisions, they are not mandatory. Because some parts are left to the state, that according to their own culture, tradition, they can include that part in the provision of their enactments. In 73rd Amendment Act, 74th Amendment Act, 73rd Amendment Act, certain mandatory provisions are given. So here Gram Sabha should be there. But the powers of Gram Sabha, they are determined by the state legislature. Okay, other parts, they are the straightforward statement. Then features of the Indian Constitution, only about fusion of power, I will tell you here. So we have a separation of power concept, not fusion of power concept. There are 2 concepts, fusion of power and separation of power. So we know separation of power. So fusion of power means exactly what? You just read that Indian Constitution at work, then you will find these meanings. Okay, because tomorrow UPSC may twist that information. Because in mains, once this question was asked on separation of power principle and its logic, that was asked in the main examination. Now about the fundamental rights, the statements are asked here. All statements here regarding fundamental rights, they are correct. Okay. Now after this, our next teacher, next faculty will continue. Okay. So I request sir, 1 minute only. I will request sir, geography teacher will come here. Only 1 minute. One minute. You can stay here, Sumit sir. Okay. So 1 minute only. I will, and geography teacher has prepared his own analysis. He will explain you about geography question, how to prepare, okay, how to give logic to that content, material, everything.
Sumit sir, please. Live, YouTube live students. Next teacher will continue this discussion now. Okay, so next teacher is Sumit Konde sir. He is the faculty of geography and ecology of our academy. Okay, so he will give you insight about questions and approach to these questions in the prelim examination. Sir, please. हो. हो हो. ते को-होस्ट करतात तुम्हाला. मीटिंग ऍडिशन देतात. 836 लावायचं होतं पण कॅमेऱ्याच्या पुढे दिसतं काय.
Okay, and ठीक है. Just. Okay, so yes, let's discuss. So actually, we are going to discuss about geography questions. Okay, so yes, first question was very basic questions, and please read NCERTs properly. अगर ऐसे questions अगर आपके गलत हो रहे तो definitely it is like not good preparation. Okay, because this test was like really basic test. Even the student which just started the preparation, so they can answer this type of question. Okay, so hardly 1 or 2 month preparation is also sufficient for this type of test. So इतनी basic test है, right? तो इसलिए इसके बाद जो भी टेस्ट होंगे तो वो इस प्रकार के तो डेफिनेटली नहीं होंगे. Okay, so this will be like we are going to advance the level of the questions. So let's see, देखते हैं कि क्या किया आप लोगों ने. ठीक है, तो उस पर डिस्कस करते हैं. चलो, let's start. The first question: India is vast country, and India is located entirely in which hemisphere? Northern hemisphere. Very good. And the first statement is definitely right. Then second, India northern hemisphere में complete. And longitude wise, we are completely in eastern. Is that true? Yes or no? Definitely yes, na? Eastern में आता है, yes, completely. Good. And the second statement, the mainland extends between latitude 8 degree to 37. Yes, it's also good, right? मतलब ये भी सही है. North hemisphere both longitudinal points are n, so that means कहाँ ना कहाँ तो सही है, right? And 68 degree east to 97, 29 का difference है longitudes में, and both are east because one UPSC previous एक question ऐसा था कि जिन्होंने उसमें क्या दिया था कि 68 degree west and 97 degree east. तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस या फ्लो में हम क्या करते हैं, हाँ वेस्ट है, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट. तो मेक श्योर दैट कि आप ये ईस्ट वेस्ट देख लो प्रॉपर्ली. ठीक है, अब यहाँ पे ईस्ट है, इट्स ओके. अगर इनकेस वेस्ट होता तो मेक श्योर दैट कि वो सही रहे ना. इट इज नॉट वेस्ट, इट इज द ईस्ट. इट मस्ट बी ईस्ट बिकॉज वी आर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इवन द आर डिफरेंस बिकॉज लॉन्जिट्यूड आर मोस्टली यूज्ड फॉर द टाइम, टू कंसीडर द टाइम. So what is the difference between time in easternmost and westernmost point of India? 2 hours. Easternmost point of India is, or state of India is Arunachal or Mizoram? Yes, it must be Arunachal. And Arunachal में कौन सा point आता है? गोरमुट्टा या किबुतु. हाँ बोलते हैं उसको. ठीक है, तो easternmost is the किबुतु. Okay, easternmost is the, which point is there? Kibutu point is there, and westernmost is the Gormota. India's westernmost. We are talking about India's westernmost Gujarat. Gujarat में कौन आता है? Gormota. And easternmost कौन है? Kibutu. Northern and southernmost, this 8 degree, 37 degree, वैसे तो 7 degree का अराउंड आता है. ठीक है, चलो. Southernmost point कौन सा इंडिया का? Indira point, Pygmalion point, right? And northernmost is the, yes, northernmost is the northernmost point of India. नाम चाहो कौन है? अच्छा, ठीक है. So northernmost point of India is Indira Col, which is also known as Daftar. Okay, it is also known as Daftar. You can see this. Just hold on. देख लो यहाँ पे. So easternmost and westernmost. You can see this. Okay, so northernmost point of India is around POK region. But POK तो हमारा है, right? छोड़ना तो नहीं है. ठीक है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो बट दफ्तर है, तो दफ्तर ही है ना. इंदिरा कोल, which is also known as इंदिरा कोल. ठीक है, पोजीशन में नहीं वाला बात है हमारा. ठीक है, southernmost is the Indira point, right? Pygmalion point, which is also known as Pygmalion.
and easternmost is the Kibuthu. Okay, Kibuthu, and westernmost is the Gormutta. Okay, Gormutta. ठीक है, तो ये ईस्ट मोस्ट वेस्ट साउथ एक्सेट्रा देख लो, स्टेट्स भी देख लो अच्छे से. ठीक है, यहाँ पे नदर मोस्ट कौन सा यूटी आएगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख. मस्ट बी लद्दाख. नाउ इट इज चेंज, दैट इज लद्दाख. ठीक है. एनीवेज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसमें थर्ड स्टेटमेंट बाकी है. सेवेंथ लार्जेस्ट एंड ओवरऑल वर्ल्ड के परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो हाउ मच पार्ट वी हैव एक्चुअली. क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. What is the answer for this? Neither one nor two. Why first is wrong? Bangladesh. बचपन है ना, बचपन मतलब क्या है? Yes, that is Bangladesh, China, Pakistan, then Nepal. Okay, so that's why बचपन. Okay, and उसके बाद थोड़ा सा लेंथ वगैरह देख लेते एक बार फर्स्ट. So what will be the length exactly? या बॉर्डर का एक चार्ट है, देखो अच्छा चार्ट है, देख लो एक बार, फॉलो कर लो. एग्जैक्टली जरूरत नहीं है बट देख लो. बांग्लादेश अराउंड 4000, राइट? चाइना 3000 के अराउंड है. देन पाकिस्तान, देन नेपाल. बचपन एमबीए. एमबीए मतलब क्या है? म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान. बचपन एमबीए घुमा करते थे बचपन में, एमबीए करते करते, राइट? तो कुछ तो भी याद रख लो, बट रख लो. सो अराउंड 15,000 के अराउंड हमारी क्या है? फ्रंट्स है, बॉर्डर्स है विद अदर कंट्रीज. हाउ मेनी कंट्रीज वी आर कनेक्टिंग एग्जैक्टली? 7 or 6 or 5? 7 countries. Okay, and the list is the Afghanistan. Okay, due and border with that. And how many states are border with ocean or sea? इंडिया के कितने स्टेट्स और बॉर्डर किस मतलब बेसिकली ओशन या सी से कनेक्टेड है? कोस्टल, बेसिकली कोस्टल कौन से कितने हैं? 9 states and 4 UTs. ओके, तो वो भी एक बार चेक कर लेना. 9 states and 4 UTs. ओके, these are the 9 states. गुजरात है ना, ये सब गिन लो तो हो जाएगा आराम से. तो 9 states are there and 4 UTs is अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप and दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पौंडीचेरी. ठीक है, एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो सॉरी, सेकंड क्वेश्चन में आंसर क्या है फिर देख लो. एंड यहाँ पे क्या दिया? और श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार ओनली, राइट? उधर पाल भी है ना ऊपर. यस, पाल स्टेट इज देयर आल्सो, राइट? पाल भी इज आल्सो. इवन वो धनुषकोडी वगैरह एक्सेट्रा देख लेना, पाम्बन है ना, वो रीजन आते हैं. नाउ in the Palk region, Kachchativu Island is in discussion. तो Kachchativu देख लेना, right? Kachchativu is in Palk. Gulf of Mannar में overall biosphere reserve है, so you should remember that. Okay, marine biosphere. ठीक है, next. Current से association रखा, because UPSC तो currently ज़्यादा 70 to 80% question will be geography current है, ऐसा connection होगा, right? Next question, चलो देख लो. Indian Peninsula के बारे में. So it was formed majorly out of the ancient gneisses and granite. Yes, because igneous है ना, igneous और metamorphism होगा, तो इससे lava deposition है. Reunion of hotspot activity, know that. Reunion hotspot के regions में Indian plate जब ground करती थी, so that lava deposition and different types वगैरह create होते हैं. Yes, gneisses and granite possible है. Granite is the basaltic rock. Yeah, sorry, granite is the igneous rock. Sorry, igneous rock, and gneisses is the metamorphosis of granite. So yes, both is करेक्ट. ओके, मतलब पॉसिबल हो सकता है दोनों भी पॉसिबल. तो यहाँ पे बस लावा प्लाटू के अलावा इन्होंने ये वर्ड यूज किया.
this one. ठीक है, अगर ऐसा दिया होता है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इट इज मेड अप ऑफ द limestones. Okay, it is formed majorly by limestones. Is that correct? No, limestone is the sedimentary, and that is mostly possible. Sedimentary or metamorphosis is possible in Shivaji, Great Himalaya, or Himalaya system. Okay, because that is cold mountain, so it is created by sedimentary deposition. Limestones वगैरह वो part होगा या basically sedimentary rock होगा तो वहाँ पे मिलेगा. ठीक. Anyways, next question, next segment. Thar Desert in the west and Karbi Anglong Plateau in the east are extension of it. Yes, we can take that. Okay, up to Aravalli section and east की तरफ जाते हो तो Karbi Anglong. Yes, we can take that because why Thar is taken in this part. Okay, वैसे तो हम Aravalli पढ़ते हैं, बराबर है. बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको रॉन्ग कंसीडर किया है. क्या है किसी ने कंसीडर? ठीक है, जनरल सोच रहे हो सर, है ना, जनरली सोच रहे सब. ठीक है, नो इशू. तो देखो यहाँ पे तो थार यहाँ पे आता है. ओके, वेस्ट में, इसके वेस्ट में ये अरावली का सेक्शन है. तो अरावली के साउथ में आपको क्या मिलेगा? साउथ की तरफ अरावली के, यस, विच पार्ट इज देयर? टू द साउथ ऑफ अरावली मारवाड़ एंड मेवाड़ प्लेटू. यूजुअली आपके बुक्स में दिया है सेंट्रल हाईलैंड मींस मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, मैकल एंड छोटा नागपुर, लाइक दैट पार्ट. ओके, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड. यस, दिस इज द सेंट्रल हाईलैंड. उसके बाद में सातपुड़ा के साउथ में अगर आप देखोगे, so this is Deccan Plateau, which includes Maharashtra Plateau, Dharwad Karnataka Plateau, Andhra Telangana Plateau, means Rayalaseema Plateau, and Bastar Plateau. Basically, Bastar जो दंडकारण्य plateau होता है. So this is Deccan Plateau. This is Central Highland, and which is separated by Manda Gap to Meghalaya Plateau, which is also known as Karbi Anglong Plateau. In Meghalaya Plateau, there are how many parts? 5 parts. Okay, or almost 6 parts. So that is Garo, Khasi, Jaitia, Mikian, Regma, and Parel. Okay, so this is a part of this plateau. But basically, अगर Central Highland में अगर हम देखते हैं, तो हम start कहाँ से करते हैं? अरावली के east से. But actually, थोड़ा और extend करना ही होगा आपको यहाँ पर. So this is the मारवाड़ मेवाड़ plateau. Okay, मतलब राजस्थान में सिर्फ desert ही नहीं है, तो 3 topography आती है. Rajasthan is considered as the plain also, because it is previously the part of Indus plains, and after that Thar Desert also. Even it has the fold mountains also. The fold mountain एक feature है, and it has the plateau also, Kota Plateau, है ना. Then after that this Marwar and Mewar Plateau, Alwar Plateau, जहाँ पे marble famous है. So actually this is this Aravalli and this plateau section. So Central Highland extends toward the west up to almost up to Thar. Got it now? वो सही होगा. Okay. एंड ईस्ट में क्या है? कार्बी एंगलॉन्ग. ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट है किसी का प्लाटूस के बारे में? एंड साउथ में कहाँ तक एक्सटेंशन होगा? कन्याकुमारी बोल? नो, इट्स नीलगिरी, है ना. सो नीलगिरी, बिकॉज वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट is again the east and west border of this plateau, and the southern border is the Nilgiri section. Okay, good. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. और एक स्टेटमेंट क्या दिया? The northeastern part are separated by Malda fault. Yes, already covered, right? West Bengal from the Chota Nagpur. Okay. Yes. But एक चीज यहाँ पे याद रखो, एग्जैक्ट आंसर वैसे तो चाहिए राजमहल गारो गैप कहा जाता है. एंड में कौन है? राजमहल. राजमहल गारो गैप. ओके, तो छोटा नागपुर के नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलेगा आपको? राजमहल हिल्स. एक्चुअली छोटा नागपुर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. Northern part is Hazaribagh Plateau, southern part is Ranchi Plateau. To the northeast, there is a Rajmahal where the Ganga touches. So this is Rajmahal footings. And वही तो झारखंड में फ्लो बनता है ना गंगा का. अदरवाइज गंगा तो मेजरली कहाँ पर फ्लो होती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल. स्लाइटली टचेस टू झारखंड वेयर राजमहल. तो वहां पे प्लेटू एंड होता है, सेंट्रल हाईलैंड. एंड नाउ गैप इज देयर, Malda gap is there where the downwrapping is happened. Okay, and now there is the sedimentation of the flood sedimentation is there. And after that, वो जैसे end होगा तो अब start होता है गारो. Now again plateaus. Okay, गारो, खासी and जयपुर. Yes, this statement is also generalistically अगर देखा जाए तो it is also. ठीक है, तो all of the above will be done. Next question. Alluvial soils. Bhangar is old, alluvial, fertile, etc. Is that true? Old alluvial is fertile.
तो ये थोड़ा लेस फर्टाइल होता है. Okay, if irrigated, then it can become fertile. Okay, but otherwise, it is not the suggestible area. Okay, मतलब इतना suggestible नहीं होता, irrigation का नहीं होता possible. And Khadar is the youngest deposits of the flood plain, and it is infertile area. So basically, it is a fertile. Okay, the most fertile or most agriculture suitable region is the Khadar. Let's see. वो देख लेते हैं एक बार. So this is the region. Okay. So देखो exactly Himalaya जब end होता है, right? So when Shivalik ends, then parallel to Shivalik in particularly crescent shape, so there is a Babar. Babar means what? Just Himalaya को cut down करके reverse में जो यहाँ पे sedimentation करके रखा है, but large pebble boulders, rock particles. This is the Babar. Usually where the river disappears. But it is not suitable for agriculture and even for settlements, right? Because यहाँ पे possible है कि कुछ settlements वगैरह agriculture नहीं है, बड़े plants मिल सकते हैं, but not good for settlements, right? Then after that, river reappear in which region? Tarai region, but proper drainage नहीं मिलता उनको, इसलिए ये कहाँ भी इधर-उधर चले जाते हैं, right? Usually they forms wetland, marshy land, tarai land, swampy lands, where the sal forest is very famous. Sal नाम का एक forest मिलता है, right? And this Tarai is the best example. You can take Dudhwa National Park. Then Gandak के तराई में कौन मिलता है? वाल्मीकि National Park, swamp deer वगैरह famous. Even Kaziranga, Manas, ये wetland जैसे parts हैं. So this is actually the Tarai section. Okay, got it everything? Tarai समझ में आ रहा है? Now river get a proper channel, proper drainage system, and then it flows in a proper system. Okay, so that is Khadar. Continuously river के साथ जो flow होता है, इसलिए final material create होगा. And this will be the most fertile, that is Khadar part. जितना fine उतना best, उतनी water holding capacity ज़्यादा होगी, जितनी water holding ज़्यादा है, उतना less water में भी वो sustain कर सकता है. So that's why Khadar is the best one. And Bhangar means what? Floods. Over the years, जितने floods ज़्यादा होंगे, तो उतना ये Bhangar develop होते रहेगा, which is locally known as Kankar also. Okay, in Bihar region, etc. And this is basically suitable, but if irrigated, they are suitable. But the most fertile अगर बात करें तो सबसे बेस्ट है खादर. ओके, याद रखें खादर. एंड यूजुअली एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी में कि विद रिस्पेक्ट टू द रिवर द टोपोग्राफी इज ऑन हाईलैंड. विद रिस्पेक्ट टू द रिवर द टोपोग्राफी इज ऑन हाईलैंड. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अमंग दिस? ओके, सो बेसिकली इट इज भांगर. तो ये थोड़ा हाईलैंड पे होता है, ऊपर होता है, टेरेसेस फॉर्म करता है. सो दैट इज भांगर. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. ठीक है, तो समझ में आया सबको स्टेटमेंट क्या रहेगी? ओके, तो सुटेबल इज द खादर. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्या होगा इसका आंसर? सिंपल है ना? टॉपिक ऑफ कैंसर पास है. यस यस, वी हैव टू कट डाउन महाराष्ट्र. हाँ, यहाँ पे मुझे लगा इनकरेक्ट है. हाँ, वो मेरे पास से नहीं है. हाँ, ठीक है. तो टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, गुना मध्य छत्तीसगढ़ी, बंग मिजो त्रिपुरारी, ऐसा कुछ तो भी याद रखो. ठीक है, मीन्स व्हाट? गुरा मध्य मीन्स क्या? गुजरात, राजस्थान, मध्य, झारी मीन्स झारखंड, बंग वेस्ट बंगाल, बंग मिजोरम एंड त्रिपुरा. पहले त्रिपुरा ले लो, देन लास्ट में मिजोरम. दिस टॉपिक ऑफ कैंसर. इसमें क्या गलत दिया उन्होंने? महाराष्ट्र में. यस, वन शुड बी एलिमिनेटेड. आंसर की में अगर इनके साथ आ जाता है ऐसे कुछ गलत तो देख लेना. तो व्हाट विल बी द आंसर? यस यस, आसाम इज आल्सो इनकरेक्ट ना. सो 2 and 3 विल बी द आंसर, राइट? तो यहाँ पे शायद गलत दिया उन्होंने. सो आंसर विल बी बी. बी रहेगा ना? ठीक है, नहीं शायद वहां से में गलत रहेगा. चलो, दिस इज द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन. ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट मीट्स, बट थोड़ा हार्ड कर लेते. चलो, ओके. सो आई एम गोइंग टू गिव सम नेशनल पार्क्स. ओके, सो दैट इज सत्यमंगलम. ओके, सत्यमंगलम शॉर्ट में लिखता हूँ. देन मुदुमलाई,
Bandipur, okay, Wayanad, okay, and Silent Valley National Park. So among these 5 options, 1, 2, 3, 4, and 5, which is correct, where the Eastern Ghat and Western Ghat meets. 1, 2, okay, okay. Actually, इसमें से देखो सत्यमंगलम आ सकता है, but most suitable, most appropriate. एक ही choose कर. Yes, that is Bandipur. Now Bandipur is there. Even Doda Betta is also correct. Even it is a Doda Betta actually is not national park, but Doda Betta is the second highest point in Western Ghat. So Doda Betta is a place where Western Ghat and Eastern Ghat meets. Even Biligiri range भी कहा जाता है इसको. Biligiri, okay. Biligiri range. So Biligiri Ranganthetta, ऐसे BR hills. Okay, so this is Biligiri or Doda Betta. So where? Yes, Western Ghat and Eastern Ghat meets. तो ये एडवांस लेवल है. ये तो सिंपल हो गया, बट ये एडवांस लेवल भी आता है. तो बांदीपुर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. ठीक है, सबसे सेंटर में आते हैं नीलगिरी, एनबीआर के पार्ट में आते हैं. चलो ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मोलासिस बेसिन वगैरह मिजोरम में आता है, ये बाद में चेक कर लेना. लुशाई हिल्स वगैरह जो होता है तो मोलासिस बेसिन डिपॉजिट्स, रिवर डिपॉजिट्स. वेयर इज द फुंदिस देयर? फुंदिस कहां पे आता है? वेरी गुड. स्टेट मणिपुर. ओके, लोकटक लेक मणिपुर. फुंदिस फ्लोटिंग, है ना, फ्लोटिंग नेशनल. विच नेशनल पार्क? यस, केबुल लामजाओ. ठीक है, केबुल लामजाओ. गुड, वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the role of the Himalayas in shaping India's climate, consider the following statement. They shape the subcontinent from the cold and chilly northern winds, means Siberian winds. Okay, near the Arctic Circle, etc. दिया है. But ठीक है, Siberian winds वहां से approach करते towards Buran, then they approach towards the south. Okay, thus it is possible. They trap the monsoon winds, forcing them to shed their moisture within the subcontinent. Yes. Even एक fact भी क्लासेस तो आप लोगों ने किए नहीं है. ठीक है, मतलब आप अलग डिफरेंट स्टूडेंट्स हो, बट देखो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है. ये शायद एग्जाम में आ सकता है. एंड जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इंडियन मॉनसून गेट ट्रैप इन दिस पार्ट एंड इंडिया गेट अ मॉनसूनल फीचर. बेसिकली मॉनसून वेस्ट इंडिया में डेवलप होता है. बट बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया के मिड से पहुंच जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो लिटरली अगर हम देखते हैं एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा आ जाएगा इसमें. So if you see the northern part of India, means northern is north of Tropic of Cancer, which is exactly double. Okay, almost double, not exactly, almost double with compared to the south part of Tropic of Cancer. Okay, the temperate part north of Tropic of Cancer is twice the area of tropical part of India. But still, India has a tropical climate. Why? Because of Himalaya. Understood? तो हिमालय की वजह से क्या होता है कि ये वार्मिंग इफेक्ट रहता है. अदरवाइज टेम्परेट होना चाहिए था, कूल क्लाइमेट्स होने चाहिए थे. ओके, वही लैटिट्यूड्स में अगर थोड़ा वेस्ट वगैरह में जाते तो यू विल गेट स्लाइटली कूल क्लाइमेट. बट बेसिकली यहाँ पे क्यों नहीं है कूल? बिकॉज वार्मिंग इफेक्ट इंडिया में लॉक होता है. ओके, तो ये स्टेटमेंट एक अच्छा है. ठीक है, कि ऑलमोस्ट इंडिया का मतलब कौन सा पार्ट ज्यादा है? ट्रॉपिकल ज्यादा है लैंड वाइज या टेम्परेट ज्यादा है? सो देन टेम्परेट. ओके, सो दैट इज द टेम्परेट. ये पॉइंट देख लेना. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड स्टेटमेंट है यस, मॉइस्चर विद इन, ये तो सही है, दोनों भी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन क्या होगा इसमें? सातमाला, महादेव, राइट, कैमूर एंड रामगढ़. ओके, सो एटलीस्ट यू कैन एलिमिनेट सम स्टेटमेंट्स अगर प्रॉब्लम्स आते तो. ठीक है, जैसे रामगढ़ बहुत ईस्ट की तरफ आएगा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड के आसपास. ठीक है, महादेव, दो महादेव है, एक शंभू महादेव है और दूसरा महादेव कौन सा है? यस, दैट इज सातपुड़ा वाला महादेव, राइट. ठीक है, जो भी है, बट सातमाला तो थोड़ा सा पहले ही आएगा अगर दोनों को भी कंपेयर करो तो. सातमाला इज द फर्स्ट एंड महादेव थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आ जाएगा, राइट.
देन और क्या ले सकते हैं, कैमूर. यस, कैमूर इज द बेस्ट एलिमिनेटिंग पार्ट. तो कैमूर कहाँ पे आता है, विंध्य की सब रेंज. एमपी में विंध्य की सब रेंज को कैमूर बाहर डिवीजन. सो वो थोड़ा सा मिड में आ गया, एटलीस्ट महादेव के बाद में. तो सेकंड लास्ट कहाँ पे, तो भी हमें कैमूर चाहिए. ओके, तो दैट इज पॉसिबल इन दिस पार्ट. एटलीस्ट थर्ड एंड फोर्थ लास्ट में चाहिए. ऐसा अगर आप देखते हो तो भी आपके दो स्टेटमेंट तो आराम से कर सकते हैं, बट थोड़ा परफेक्शन लगेगा इस स्टेटमेंट में या इस क्वेश्चन में. ठीक है, सो दैट विल बी द फर्स्ट इज द सातमाला अजंता किसका पार्ट है, सह्याद्री का सब, राइट. देन महादेव इज द पार्ट ऑफ इवन सह्याद्री ऑल्सो एंड सातपुड़ा, मतलब दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग है. तो सातपुड़ा के कौन से पार्ट से कर, और कौन से पार्ट से कर सकते, तो ठीक है वो दे देता हूँ आपको. ठीक है, एक है माइकल. ओके, देन आफ्टर दैट महादेव, गाविलगढ़. Okay, so these are the four parts and Rajpipla. So arrange from west to east. 1, 2, 3, 4. Arrange from west to east. Now. Arrange from west to east. The parts of Satpura. 1, 1, 3, 2, 4. Very good. Yes, perfect. Huh? So first I will Rajpipla, then Mahadev, then Gavilgarh, and then Michael. Michael is on border with Chhattisgarh. ठीक है, देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, so this is Rajpipla on border with MP and Gujarat. Okay, then Mahadev next, then Gavilgarh. थोड़ा एक्सटेंड हो गया और माइकल लास्ट. देख लो, दिस इज राजपीपला फर्स्ट. ओके, देन महादेव, पहले महादेव स्टार्ट होती है, राइट. देन गाविलगढ़ ऑन द बॉर्डर विथ महाराष्ट्र एंड एमपी. अमरावती, मेलघाट, बराबर. नेक्स्ट ईस्ट की तरफ कौन है, माइकल ऑन बॉर्डर विथ एमपी एंड छत्तीसगढ़. नियर बाय इज द अमरकंटक प्लेटू. तो वो माइकल मतलब सातपुड़ा से क्लोजेस्ट है या फिर विंध्य से क्लोजेस्ट है, अमरकंटक प्लेटू. सो सातपुड़ा से, बिकॉज वो माइकल के ही पार्ट में आता है. प्रायोरिटाइज विद द सातपुड़ा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. अमरकंटक से वो मतलब सबसे लॉन्गेस्ट वेस्ट गोइंग रिवर फ्लो होती है, एंड नॉर्थ की तरफ कौन है, शोर, राइट. सो दैट्स व्हाई अमरकंटक इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिटवीन महादेव एंड गाविलगढ़ व्हिच प्लेटू इज देयर, where the second longest river flows from the point the second longest river starts or originates, Baitul. Okay, तो ये देखो बैतूल से तापी निकलती है. तो एग्जैक्टली महादेव एंड गाविलगढ़ के बिटवीन कौन है, दैट इज बैतूल प्लेटू. बैतूल प्लेटू तो तापी निकलती है, राइट. अब इसके सबसे पूर्णा, तापी पूर्णा मर्ज एंड फ्लोज टू द साउथ ऑफ राजपीपला एंड देन मर्ज विद द यस अरेबियंस या गल्फ ऑफ खंबात की बात करते हैं. ठीक है, तो ये देखो ये पूरा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए बहुत अच्छे से मतलब सीधा सीधा मैप ड्रॉ करना है. अगर आप प्रॉपर एक एमपी का मैप निकाल लेते हो, राइट, तो इस प्रकार से थोड़ा मैप दिखेगा आपको. ठीक है, तो ईस्ट में वेस्ट में कौन आता है एमपी के, दिख नहीं रहा है क्या, ओके ठीक है, बट एनीवेज आप दिख रहा है. तो विंध्य, विंध्य डिवाइड्स एमपी. ओके, विंध्य एमपी को बीच में से डिवाइड करता है. विंध्य का पार्ट मतलब कौन है, कैमूर. ओके, कैमूर, भार्नेर, और यहाँ पे विंध्य के नॉर्थ और साउथ ऐसे दो डिविजन है. तो विंध्य के वेस्ट में कौन है, मालवा. गॉट इट. नॉर्थ में कौन है, यूपी जहां से लगता है वहां पे बुंदेलखंड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी करंट में भी चल रहा है, राइट, बुंदेलखंड. देन आफ्टर दैट टुवर्ड द साउथ सातपुड़ा इज देयर, राजपीपला, महादेव, गाविलगढ़ एंड माइकल. ठीक है, एंड टू द ईस्ट ऑफ दिस विंध्य ऑन द बॉर्डर विथ छत्तीसगढ़, बाघेल, विच इज देयर बाघेल. ओके, तो एग्जैक्ट कोड कहां पे आता है वो बहुत जरूरी है.
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉम्प्लिकेशन इज इन एमपी। ओके, जैसे यहाँ से अमरकंटक है तो फिर अमरकंटक एग्जैक्ट कहाँ तो माइकल के पास है, यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है और कहाँ से निकलती है, यहाँ से ऊपर शोन कैसे जाती है, शोन फ्लोज बिटवीन बागेलखंड एंड कैमूर, है ना, तो एग्जैक्टली वो लोकेशन देखेंगे। साउथ में यहाँ पे गांधीगढ़ एग्जैक्टली कहाँ पे, कौन से बैतूल प्लाटो एग्जैक्टली कर रहा है, फिर तापी कैसे वैसी तरह जाती है, आने वाले इसके नेक्स्ट टेस्ट में तो डेफिनेटली इसके क्वेश्चन। ओके, तो और भी प्लाटोस देखो, रेवा प्लाटो इज देयर, रेवा इज इन द न्यूज राइट नाउ, यू नो दैट एमपी का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट हुआ है रिसेंटली यहाँ पे, मतलब लास्ट ईयर ऐसे। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस एरिया इज इन द न्यूज। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्या होगा इसका आंसर? द हिमालय along with other peninsular mountains are young, weak and flexible in the geological structure. True है ना? Yes, definitely true. Because cold mountains है, cold mountains are comparatively weaker because they are sedimentary rocks. Okay, compression से बना है ना? Which force is there? Compressional or tensile? Himalaya formation. Compression. When there is a convergence, compression is there. When there is a divergence, tensile force is there. So tensile का example है clear force. Yes, rift region, but which rift? Narmada Mahan, the rift region, or Satpura, that part. But next statement. They are still subject to the interplay of exogenic and endogenic forces resulting in the development of faults and folds and thrust plates. Yes, it is also true. Because कुछ ना कुछ अभी यहाँ पे चल ही रहा है, जैसे कन्वर्जेंस होता है तो अर्थक्वेक फील होता है, राइट? अभी आया था ना अर्थक्वेक, so that's why exogenic endogenic चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। Endogenic is there, convergence endogenic is there, okay, and exogenic में क्या होगा फिर? weathering activities, जैसे ऑर्डर लिफ्ट होता है, ऑर्डर लिफ्ट पे भी आ सकता है क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर लिफ्ट, सेकंड ऑर्डर लिफ्ट एंड थर्ड ऑर्डर लिफ्ट। थर्ड मतलब क्या होता है? लास्ट फेज, माउंटेन्स बन गया बट अभी साथ ही साथ और क्या चल रहा है यहाँ पे? एक्सोजेनिक एक्टिविटीज, मींस इरोजन, डिपोजिशन, वेदरिंग, मास मूवमेंट्स, दोज आर देयर इन थर्ड ऑर्डर लिफ्ट। फर्स्ट ऑर्डर लिफ्ट इज सिर्फ नॉर्मल प्लेट्स, ओशनिक प्लेट या कॉन्टिनेंटल प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ओनली प्लेट्स आर देयर। सेकंड ऑर्डर लिफ्ट इंटरैक्शंस इज देयर, कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, उससे क्या बनता है? ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, व्हाटएवर, तो दैट इज सेकंड ऑर्डर। तो बेसिकली उनका ये बोलना है कि सेकंड एंड थर्ड चल रहा है कि यस चल रहा है, दोनों भी चल रहा है, ठीक है। इसलिए तो रिवर्स कट डाउन कर रहे हैं, गॉर्ज बन रहे हैं, कैनियंस बन रहे हैं, राइट, बाकी डिफरेंट रैपिड्स बन रहे हैं, ये सब चल रहा है। ये सेकंड इज 2। Various landforms like gorge, V-shaped valleys, rapids, waterfall and deltas are indicative of this stage. ओके, अब यंग फेज में है तो लास्ट यहाँ पे रैपिड्स वगैरह मतलब वाटरफॉल वगैरह आ जाएगा, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे इंडिकेटिव दिया है डेल्टा फॉर्म इन द कोस्टल रीजन। ओके, लास्ट डेल्टा यहाँ पे दिया है, सो दिस डेल्टा मस्ट नॉट बी देयर बिकॉज डेल्टा इज अवे फ्रॉम द हिमालय पार्ट। ओके, सो इसलिए उसका वहां पे इतना रिलेशन नहीं रहेगा, वो लास्ट में आना चाहिए था बिकॉज हिमालय के बारे में स्टेटमेंट्स है और डेल्टा इज अवे फ्रॉम द those parts, बट पहले ठीक है, मतलब गॉर्ज विषय वगैरह चल जाएगा, अपर कोर्सेस है, so that's why 1 and 2। ठीक है, हिमालय क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन अबाउट हिमालय फॉर्मेशन, कंप्रेशन एक्सेट्रा, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है? एक्सोजेनिक एंडोजेनिक क्लियर है? एंडोजेनिक में देखो दो प्रकार होता है, एक आता है कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट एंड एक होता है डायस्ट्रोफिक। इसमें से कौन सा हिमालय के लिए रिस्पॉन्सिबल? कैटास्ट्रोफिक या डायस्ट्रोफिक? हिमालय फॉर्म बाय विच एक्शन, विच प्रोसेस, कैटास्ट्रोफिक और डायस्ट्रोफिक? कैटास्ट्रोफिक मींस सडन मूवमेंट्स, अर्थक्वेक वगैरह भी हो सकता है बट दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन। डायस्ट्रोफिक मींस स्लो मूवमेंट, डायस्ट्रोफिक में भी इपिरोजेनिक आते हैं एंड ओरोजेनिक, तो कौन सा रहेगा फिर इसमें? एक तो पहला तो समझ गया कि डायस्ट्रोफिक इज स्लोली क्रिएट होना, स्लोली कंप्रेशन, स्लोली अपलिफ्टेड एंड हिमालय, सो व्हिच इज दैट? एंडोजेनिक में कौन सा?
डैश टॉपिक, ठीक है, बट डैश टॉपिक में भी दो पार्ट है, एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक. सो विच इज द ओरोजेनिक? बिकॉज हम बोलते हैं ना हिमालयन ओरोजेनिक. ओरोजेनिक मींस क्या होता है? ओरोजेनिक मींस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स है, उससे जो बनेगा तो दैट इज ओरोजेनिक. एंड व्हाट इज एपिरोजेनिक? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, अपलिफ्टमेंट एंड डाउनवर्ड. सबमर्जेंस एंड इमर्जेंस इज ड्यू टू एपिरोजेनिक. तो इसलिए एपिरोजेनिक ऐसा वर्ड कभी हिमालय में नहीं लगेगा या कोई माउंटेन फॉर्मेशन. तो वो कहाँ पे लग सकता है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. समझ पा रहे हो? तो वहां पे इपिरोजेनी ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, लाइक दैट. ओके, ठीक है. तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये टेक्निकल वर्ड्स. नेक्स्ट, yes, northeastern part of the Kashmir Himalaya is cold desert, ठीक है, which lies between the greater and Karakoram, means Ladakh is there, Leh Ladakh region, yes, it is cool. Second, important glaciers of South Asia such as Baltoro, Siachen also found in this part. Yes, Karakoram K2 के part है. Okay, कौन से part है? Siachen, Baltoro, Biako, है ना? So these are the parts of, yes, K2. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हो. तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं पक्का उसको अच्छे से देख लेना, मतलब गलती से भी एक भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो दिस इज ऑल ग्लेशियर्स. आई नो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट एटलस मैपिंग के थ्रू आप करो. जैसे कि यहाँ पे देखो बाल्टोरो एग्जैक्ट कहाँ पे. सियाचिन लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था? लास्ट ईयर. तो सियाचिन इज टू द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ईस्ट ऑफ लद्दाख, ईस्ट ऑफ अक्साई चीन एंड नॉर्थ ऑफ आई थिंक गिलगिट दिया. सो व्हाट विल बी द आंसर? तब आना चाहिए वो विद रिस्पेक्ट टू दिया. तो एक्चुअली गिलगिट यहाँ पे लास्ट रिवर है, पीओके में है. गिलगिट के नॉर्थ में अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे, है ना, वो खान कॉरिडोर आता है. बट दिस सियाचिन इज इन पोजीशन ऑफ इंडिया और नॉट? यस, अक्साई एंड सियाचिन में बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. सियाचिन मतलब उनको लगता है कि हाँ वो एलएसी के उधर का पार्ट है. नो, इट्स द अक्साई चीन एरिया, दैट इज डिफरेंट एंड सियाचिन इज डिफरेंट. Siachen is between LOC and LSC. We can say that, okay, and which is recently open for tourism also. तो हमारी गवर्नमेंट भेजेगी हमको वहां पे. तो सियाचिन हमारे पास है, याद रखना. सियाचिन is in possession with India and which passes there to go to Siachen, enter to Siachen, खारदुंगला पास. ठीक है, तो खारदुंगला वगैरह देख लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से सियाचिन अगर जाना है तो फ्रॉम लेह टू this Siachen there is a Khardungla pass. Okay, passes भी अच्छे कर लो. सेकंड है कि यहाँ से रिवर कौन से निकलती है? Siachen is the largest glacier in entire Himalayan system. सबसे बड़ा है, 70 स्क्वायर किलोमीटर का, तो बहुत बड़ा है, राइट. जस्ट इमेजिन 70 मतलब पुणे बैठ जाएगा आपको, ठीक है. तो ऑलमोस्ट इतना बड़ा है. तो दिस ग्लेशियर से कौन से रिवर्स निकलते हैं? शोक एंड नुब्रा. ओके, तो ये साउथ की तरफ फ्लो होता है एंड देन दे मर्ज विद इंडस. ओके, तो नॉर्थ से मिलने वाली रिवर्स शोक एंड नुब्रा. तो रिवर्स कौन से निकलते हैं? एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद ये लेक्स वगैरह देख लेना. और उसके बाद ये देवसाई प्लेन्स क्या है, सोडा प्लेन क्या है. मुझे लगता है बहुत स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं. लिंगिटांग अभी यहाँ पे उमलिंगला पास यूज में है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड बना है, राइट. इवन हॉट स्प्रिंग रीजन यूज में है, ठीक है. तो ये डिस्प्यूटेड पार्ट जो अभी यूज में है, तो वो थोड़ा डिटेल देखिए. नेक्स्ट, so Karewa region, you know that Karewa is famous for saffron. Northwest flat part of Pir Panjab is the Karewa region, right, which is famous for the saffron production. Pir Panjab ke northwest flat part, which is good for agriculture. Okay? And what is dunes and dwars? What is difference between this? Similarly, Karewa is saying dunes and dwars are there, which is good for agriculture. So where is the dunes exactly? Uttarakhand and Himachal, mostly between Middle Shivalik or Great Shivalik, sorry, Great Middle. So which is the nothing but dry lake. You know, old lakes now they becomes dry, but sediment is there. That sediment is suitable for agriculture. Okay, so that is dunes and
द्वारस इज इन, द्वारस कहाँ पे आता है? द्वारस रीजन। यहाँ पे क्या फेमस है? आफ्टर दार्जिलिंग, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर, आपका एटलस में भी दिया है, देखो नाम दिया है द्वारस, तो ये पूरा बॉर्डर का पार्ट आता है। तो द्वारस मीन्स द लोअर हिमालय पार्ट, मीन्स शिवालिक वगैरह पार्ट, राइट? आसाम भूटान बॉर्डर, वेस्ट बंगाल सिक्किम बॉर्डर एंड आसाम अरुणाचल बॉर्डर. So this is Dwars and it is famous for टी कल्टीवेशन. ओके, तो द्वार इसके लिए फेमस है. द्वार फॉर्मेशन इज फेमस फॉर टी कल्टीवेशन. तो जितने भी फॉर्मेशन से लाइक करेगा तो काइंडली कवर दैट. ओके, नेक्स्ट, द रीजन ड्रेन्ड बाय द रिवर्स इंडस, ट्रिब्यूटरी झेलम, चिनाब, इस तो ये आसपास यहाँ पे फ्लो होता है. सो दैट इज दैट. ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज? बाकी नॉर्थ टू साउथ वगैरह फ्लो पता नहीं. इंडस, देन झेलम, देन चिनाब, देन रावी, बियास, सतलुज. इनके बिटवीन जो दोआब्स है वो भी देख लेना. बारी दोआब, बिस्तर दोआब, चेज दोआब, श्री हिंद नाम से भी आता है, श्री हिंद दोआब, एक्सेट्रा, वो सब देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? सो टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स लाइज द इंडियन डेजर्ट. सही बात है. इट इज अ लैंड of undulating topography, longitudinal dunes. It is correct. This region receive rainfall 150. हाँ, ज्यादा हो गया ना, तो डेजर्ट कैसे होता है, राइट? इंडिया का खुद का ही एवरेज रेनफॉल कितना है? अराउंड 88 सेंटीमीटर. 88 सेंटीमीटर, राइट? लास्ट 30 इयर्स का अकॉर्डिंग टू IMD. सो 100 भी पकड़ लो, चलो ठीक है, कोपेन की बात के अकॉर्डिंग 100 आता है, तो ठीक है, वो भी पकड़ लो तो 150 बहुत हो जाता है. सो इट्स इनकरेक्ट. It is also known as मरुस्थली. Yes, मरुस्थली थाली भी कहा जाता है, ध्रियन भी बोलता है. These are the other names, ध्रियंस, etc. Got it? 1, 2, 4 is correct. Only third is wrong. Next, 83. क्या होगा यहाँ पे? बनिहाल is Pir Panjal. If you want to go from Srinagar to Jammu, Jammu to Srinagar अगर आपको जाना है तो आपको कौन सा लेगा? कौन सी रेंज लगती है? पीर पांचाल, जवाहर टनल. कुछ टाइम के लिए सबसे लॉन्गेस्ट टनल भी था, बट अब अलग है. ठीक है, देख लो कौन सा है. तो बनिहाल, पीर पांचाल. जेलेपला, सिक्किम, रथुला जेलेपला इज इन सिक्किम. फोटोला यहाँ पे ग्रेट हिमालय दिया है ऐसे डायरेक्टली, बट एक्चुअली वो मिडिल के आसपास आता है. ओके, कहाँ पे आता है फोटोला पास? यस, फोटोला एक बार देख लेना. So that is nearby Portula होगा जास्कर के पास. Okay, खारदुंगला, खारदुंगला लद्दाख के पास. खारदुंगला इज इन लद्दाख. तो पोर्टुला जो है वो जास्कर के पास, मतलब ट्रांस हिमालय के पास. ठीक है, तो स्टेट वाइज देख लो और हिमालय वाइज भी देखना जरूरी. जोजिला अब बन रहा है यहाँ पे. तो ये गलत है क्योंकि जास्कर नहीं है, ग्रेट हिमालय. एकदम सिंपल है. अब देखो, हिमाचल से मुझे जाना है लेह की तरफ. अब इससे पहले कौन सा यूज होता था? रोहतांग पास, विच वाज सीजनली क्लोज्ड. अब यहाँ पे कौन सा टनल बना हमने? अटल टनल. तो ये ग्रेट हिमालय को तोड़ के जा रहा है, राइट? बिकॉज आपको अगर लद्दाख की तरफ जाना है तो यू हैव टू ब्रेक दिस ग्रेट हिमालय, राइट? अब लद्दाख में, अब श्रीनगर से देखा जाए तो अब कौन सा पास है? जोजिला. ओके, तो जोजिला आता है. तो बेसिकली वो कौन होना चाहिए? जास्कर नहीं, तो यहाँ पे कौन है? ग्रेट हिमालय. नाउ ये कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है सेम लाइक अटल टनल जैसे बना है, तो वैसे ही जोजिला भी अब पूरा लॉन्गेस्ट बना है. ठीक है, तो देख लो, उसको ट्रैक रखो. श्रीनगर टू लेह कनेक्टिविटी, दैट इज जोजिला. बट किसको ब्रेक करेंगे सब? ग्रेट हिमालय. ठीक है, चलो. सो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट. दिस शुड बी द ग्रेट एंड दिस शुड बी द, क्या था वो? जास्कर ना, जास्कर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इनकरेक्ट है ना? देखा था इनकरेक्ट? नहीं देखा था. The western coastal plains are an example of submerged coastal plains. Okay, so because of this submergence, it is a narrow belt and provides natural condition for the development of ports and harbor. Actually, सही आएगा ये. ठीक है, कांडला, भाजगांव, जवाहरलाल नेहरू, मतलब जो JNPT जिसको हम कहते हैं, तो सभी बेंगलोर, कोचिन वगैरह वो सब
वेस्ट कोस्ट जाते हैं, ये भी सही है। द मलबार कोस्ट हैज गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द फॉर्म ऑफ करेवा, इसका कोई संबंध नहीं है। इसका क्या फीचर है मलबार कोस्ट का? यस, क्या फीचर रहेगा मलबार कोस्ट? मलबार मतलब केरला कोस्ट। Yes, what is the feature? Backwaters. Backwaters means locally it is known as Kayal. Okay, so 4 is wrong. 1, 2, 3 is correct, but I think incorrect मुझे पता नहीं कैसे पूछा। ठीक है, वो correction है इसमें। So this is correct, huh? This is not incorrect, this is correct. Okay, आपके इसमें क्या दिया? ठीक है, cancel कर दो। Actually, वो 3 different है, तो करेंगे हम, minimize करेंगे। Sorry for this. ठीक है, तो it is correct actually. तो 1, 2, 3 is correct for this. Because it is Kayal. Kayal. Kayal means what? Backwaters. ठीक है, इस करेवा तो ऑलरेडी दिखा हमने जम्मू कश्मीर। So 1, 2, 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, इसमें कुछ पूछना है किसी को? सबमर्ज इमर्ज पता है ना सबको? सबमर्जर्स कौन से पोस्ट है इंडिया के? एंटायर वेस्ट कोस्ट वैसे देखा जाए ना, पहला स्टेटमेंट यूपी से तो नहीं पूछेगा ऐसा, बट एग्जैक्ट ये गलत है। बिकॉज महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका इज सबमर्ज कोस्ट, केरला इज द इमर्जेंट कोस्ट। केरला इमर्ज हो चुकी है, इसलिए जो पीछे पानी निकल गया और बच गया, दैट इज बैकवाटर, दैट इज कायम, वेम्बनाड, अस्थमुड़ी। सो दिस इज सम एग्जांपल, राइट? इवन गुजरात, रन ऑफ कच्छ इज द इमर्जेंट कोस्ट। तो पूरी वेस्ट कोस्ट को अगर सबमर्ज बोलना ही गलत हो जाए। ओके, so some is submergent, some is emergent. Coromandel coast is emergent. Krishna Godavari delta is emergent. ईस्ट पे कोई सबमर्जेंट नहीं, ईस्ट पे जो भी है तो वो इमर्जेंट है या फिर नॉर्मल है कोस्ट इनिशियली जैसे। बस वेस्ट पे एक ही बचता है, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक इज सबमर्जेंट। ठीक, इसमें कुछ और डाउट्स है किसी को? और ये कौन से मूवमेंट से? इपिरोजन, बराबर, इपिरोजन। बाकी कितने पोर्ट्स अगर सब पता है ना सबको? 13 पोर्ट्स है ना, मेजर पोर्ट्स। मैक्सिमम पोर्ट्स कौन से स्टेट में आपको? सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट्स कौन से स्टेट में? मेजर पोर्ट्स। यस, वेस्ट कोस्ट तो अच्छा है, बट वहां पे माइनर पोर्ट ज्यादा है। वेस्ट कोस्ट में मेजर पोर्ट अगर देखा जाए तो ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा है, 6 and 7, 6 वेस्ट, 7 ईस्ट। बट सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में आता है मेजर पोर्ट्स? एग्जैक्टली, तमिलनाडु, एन्नोर, चेन्नई एंड तुतिकोट। गॉट इट? 3 पोर्ट्स हैं। देन सेकंड इज महाराष्ट्र, मुंबई एंड जयपुर। तो 13 मेजर पोर्ट्स आज देख लो, डिटेल्स उसके करेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम east of Bhutan Himalayas up to the Dipu Pass। सही है? दीपू पास इन द वेस्ट नहीं है, तो ये क्या चाहिए था? ईस्ट चाहिए था। एक्चुअली दीपू पास इज एकदम लास्ट में आती है, दीपू या दीपर पास। देयर आर 2 passes टू द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ अरुणाचल। अरुणाचल का मैप अगर आप देखो इस प्रकार से कुछ दिखेगा, राइट? ऐसा होगा थोड़ा सा, राइट? तो इसके ईस्ट में कौन है? म्यांमार। सही बात है। ऊपर कौन है? चाइना। तो यहाँ पे 2 पासेस इंपॉर्टेंट है। नीचे जो स्टेट है वो दैट इज नागालैंड ना, बराबर है? और यहाँ पे कौन है? आसाम। तो देखो, म्यांमार अगर ट्राई जंक्शन, चाइना, म्यांमार एंड इंडिया का ट्राई जंक्शन मतलब चौकान, सॉरी दिस दीपर पास, दीपू पास है। और अगर सिर्फ म्यांमार जाने तो मोस्टली वी यूज द चौकान पास। ठीक है, कौन से पास है? चौकान। तो देयर आर 2 passes टू द एक्सट्रीम अरुणाचल, ईस्ट ऑफ अरुणाचल, चौकान एंड दीपू। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो ये ईस्ट चाहिए था एक्चुअली। वेस्ट की तरफ अगर बोलते हो तो फिर यहाँ पे क्या लिख सकते थे? जिस 1962 में यहाँ से अटैक हुआ था चाइना से। तवांग इज द रीजन, नॉट पास, बट तवांग रीजन में ही वो पास है। यस, इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पे जब अनाउंस किया था तब वो पास के बारे में मेंशन किया था, वी हैव अटैक फ्रॉम दिस पास and now the Chinese army reach up to the culture also as something as a now. Yes, that is Bomdila. Okay, that is Bomdila pass. तो देख लेना ये बोमदिला क्या है, कहाँ रहता है। तो वेस्ट की तरफ बोमदिला अरुणाचल के एंड ईस्ट की तरफ दिस। ओके, एनीवेज नेक्स्ट स्टेटमेंट, द रेंज डिसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स
ईस्ट टू वेस्ट दिया है। ओके, तो ईस्ट टू वेस्ट, अब ईस्ट टू वेस्ट थोड़ा मतलब कुछ रिवर्स आ सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट बन सकती है, जैसे लोहित वगैरह है, थोड़ा सा कुछ ईस्ट टू वेस्ट पैटर्न बनेगा, बट ठीक है। तो वैसे भी फर्स्ट अगर एलिमिनेट होता है तो ऑप्शन हमारे पास वैसे भी तीनों, मतलब लास्ट दो ऑप्शन मेरे पास जाते हैं, 2 and 3 एंड ऑल ऑफ दैट। थर्ड देखो एक बार, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक कामिंग, सुबांसरी, दिबांग, दिबांग लोहित, these are reason for the higher rate of fall, basically rainfall, thus having the highest hydroelectricity। yes, ये तो सही है, ये तो परफेक्टली करेक्ट है, राइट। तो इसलिए नन ऑफ द अबव रहेगा क्या? नो। ओके, वन तो वैसे भी इनकरेक्ट है, वो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ऑल ऑफ द अबव रहेगा? नहीं रहेगा। तो तीन अगर सही है तो मेरा फिर सी होना चाहिए। तो ये होता है एलिमिनेशन। यू आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट इन यूपीएससी, मतलब सभी पता है ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तो फिर वैसे आप टू द ट्रिक्स जा सकते हैं। एलिमिनेशन, दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेशन। मस्ट बी एंड मस्ट नॉट बी। मस्ट बी मींस ये पता ही होना चाहिए, ये होना ही चाहिए आंसर है, मतलब अननेसेसरी कभी यूपीएससी देता नहीं, अगर जो करेक्ट है वो ऑप्शन में होना ही चाहिए। ये भी एक ट्रिक होती है, मतलब एलिमिनेशन आपको ये पढ़ाया जाता है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, वो कट कर दो, बट और एक ट्रिक ऐसी होती है कि मस्ट बी। यूपीएससी ने क्या टाइम पास नहीं दिया, वो अगर सही है तो आंसर में होना ही चाहिए। सो दैट इज मस्ट बी। ठीक है, तो आंसर विल बी 2 and 3 फॉर दिस। नेक्स्ट, Barak is an important river in Manipur and Mizoram. yes, ये हल्का सा मिजोरम या मणिपुर के साइड से ही निकलती है, फिर आसाम में एंटर करके फिर ये बांग्लादेश चली जाती है, राइट। सो इट विल बी करेक्ट। देन नेक्स्ट, द फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर इज यूनिक, प्रेजेंस ऑफ लार्ज लेक्स, लोकतक है ना, बिल्कुल है, एंड मिजोरम आल्सो नोन एज मोलासिस बेसिन, ऑलरेडी कवर्ड। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। इसका बाद में देख लेना, बराक कहां से ओरिजिनेट होती है। यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछा था, 2018 का समथिंग क्वेश्चन था। उन्होंने क्या दिया था कि ब्रह्मपुत्रा को मिलने वाली, अरुणाचल से मिलने वाली रिवर्स कौन सी? उसमें ऑप्शन था लोहित था, देन दिबांग एक था, सुबांसिरी एक था, एंड बराक एक था। बराक इज देयर? नो, बिकॉज बराक नीचे निकल जाती है, समझ रहे, नीचे निकल जाती है, उसका ब्रह्मपुत्र से कोई संबंध नहीं। बाद में देख लेंगे। उस पे नेशनल वाटरवे नंबर 6 भी आता है, लाखीपुर टू भांगा, शॉर्टेस्ट नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया। ठीक है, बराक देखो आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, northern plains consider the following statement. The northern plains are formed by the alluvial deposits brought by the rivers. सही है, बिल्कुल। ये heat trough fill up होता है over the time and tethys diminish होता है with the sedimentation, जिसको कहा जाता है monotonous aggregational plain formation। मोनोटोनस एग्रीगेशनल प्लेन मतलब कंप्लीटली जो ट्रफ था वो फिल्ड हो गया था इससे सेडिमेंटेशन, एंड नाउ देयर इज अ मोनोटोनस टोपोग्राफी, मतलब बाकी कुछ नहीं है, पूरा मोनोटोनस है। जैसे महाराष्ट्र में थोड़ा घूमने जाओ, इधर उधर पहाड़ दिख जाता है, वहां पे दिखे रहते हैं नहीं, एकदम प्लेन पार्ट है, फ्लैट पार्ट है, बिकॉज इट इज फिल्ड, इट इज कंप्लीटली फिल्ड। So this is known as monotonous aggregation plain. Yes. Second, from the north to south, this plain can be divided into 3 major zones. भांगर, तराई, एलुवियल प्लेन्स, ऐसा कुछ दिया है नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो ऐसे भांगर नहीं आएगा, पहले कौन आता है? भाबर। ओके, सेकंड कौन देखा था हमने? तराई। नेक्स्ट कौन है? भांगर, एंड देन खादर, लास्ट विल बी द खादर। ठीक है, तो ये मैच ही नहीं हो रहा है कहां पे, तो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। द एलुवियल प्लेन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू खादर एंड भाबर, ऐसे दिया है। सो ये मैच नहीं कर पा रहा है, तो वो सिर्फ वही पार्ट में, अदर के पार्ट्स। ओके, मतलब ये अदर पार्ट्स। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट 88, अगेन सेम पार्ट पे क्वेश्चन देखो। साउथ ऑफ तराई बेल्ट इज ओल्ड, सही बात है। न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स नोन एज भांगर, ओके, एंड खादर, सही है, गुड। भांगर मतलब ओल्ड है and new मतलब खादर, it is correct. Next, these plains have characteristic features of mature stage fluvial, this part है ना, bass and minerals वगैरह मिलते हैं क्या? Yes, oxbow lake है ना, braided channels वगैरह भी मिलते हैं। तो ये river and deposits या river के landforms हैं। Okay, the Ganga plains are also known for their riverine island and sandbars.
वैसे बहुत ज्यादा रिवर एंड आइलैंड ब्रह्मपुत्र में मिल सकते हैं बिकॉज लॉट ऑफ सेडिमेंटेशन एंड रिवर स्पीड वेरी स्लो इन आसाम, सो बेसिकली वो आपको ब्रह्मपुत्र में ज्यादा मिलता है। So it is incorrect. 3 eliminate. Okay, तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं। फोर्थ इज द मोस्ट ऑफ दिस एरियाज आर सब्जेक्ट टू पीरियडिक फ्लड्स। यस, बहुत ज्यादा है। शिफ्टिंग मतलब कोसी, गंडक, घाघरा, ये बहुत ज्यादा फ्लड है। यस, इट इज करेक्ट। ओके, तो लास्ट 1 to 4 will be the option. Next question. The stage of Haryana and Delhi form a water divide between Indus and Ganga. Is that correct? Very good. ठीक है, तो यहाँ पे सतलज समझ लो लास्ट पकड़ते हैं, राइट? और यहाँ से फर्स्ट को नहीं यमुना, इसके बिटवीन आ रहे ना ये हरियाणा दिल्ली, हरियाणा एंड दिल्ली इज बिटवीन दिस टू। नाउ टेल मी दैट ऑलमोस्ट देखो रावी दिया सतलज, इंडस, झेलम, इधर से यमुना, रामगंगा, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, व्हाटएवर जो भी आगे सब मिलते, चंबल, सिंध, बेटवा, व्हाटएवर, इसके बीच में एक ही रिवर है जो हरियाणा से आइसोलेटेड है और राजस्थान में जाती है, which is very separate। आपके लिए बीच में कौन है? लूनी एकदम नीचे है ना, हरियाणा चाहिए मुझे, हरियाणा से टूवर्ड राजस्थान, आपके लिए बीच में खड़ी है सबके जाए, which is very separate। yes, ancient history में भी आता है। that is separate now। now existing one, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से फिर नीचे आती है कालीबंगन सेटलमेंट इज देयर। आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन में कालीबंगन सेटलमेंट्स। यस, वेरी गुड। नहीं, लास्ट में बताया था क्या? यस, एग्जैक्टली, इट इज अ गग्गर। ओके, तो गग्गर देख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंदिरा गांधी का नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम इट्स डिफरेंट है ना, मतलब वो कनाल है, ऐसा ना। ठीक है, बाकी चलो फिर बाद में आता है माजुली इज द बिगेस्ट इनहैबिटेड रिवर एंड आइलैंड इन द वर्ल्ड। So, so yes, it is correct। न्यू फैक्ट है, बट देख लो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन किया ना इसको, अच्छा रैंक निकालो, नहीं तो इधर पोस्टिंग है, क्योंकि डीएम होगा ना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है ना, ये आईएएस होगा इसका अलग से, बीच में बैठोगे ब्रह्मपुत्र, तो रैंक भी अच्छा निकालना पड़ता है, राइट? एक्चुअली मेरा एक स्टूडेंट है वहाँ पे, इसलिए परेशान नहीं चल रहा, फ्लड्स आते हैं ना, दैट इज द इशू। ठीक है, तो माजुली इज नाउ डिस्ट्रिक्ट है, या ये मतलब आईएएस होता है। ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऐसा दिया। सेकंड क्या दिया उन्होंने? रॉन्ग है ना, क्या दिया? साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट दिया है, तो नॉर्थ से ईस्ट बोल सकते हैं, साउथ एंड देन साउथ वेस्ट, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट दिया है इनिशियली, तो नॉर्थ ईस्ट नहीं है, इट्स नॉट अ नॉर्थ ईस्ट, तो वेस्ट ही पकड़ के चलो, या साउथ, साउथ या साउथ वेस्ट, लाइक दिस। ठीक है, तो 1 and 3 will be the answer for this। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में एक्सप्रेशन देखो अगर इनकेस में डाउट है। द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, इसको क्या कहते हैं? known as the trellis, example which are the rivers of the northern plains। ओके, तो इसमें क्या होगा? तो इट इज इनकरेक्ट, द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ट्रीज वगैरह, तो ये डेंड्रिक होता है, ट्रेलिस नहीं होता, डेंड्रिक पैटर्न्स नॉर्दर्न प्लेस में मिल जाएगा। सेकंड क्या बोल रहे हैं? व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर फ्लोज पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जॉइंस देम राइट एंगल। ओके, सो इसको क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट ऐसा कुछ आता है, या इसमें ट्रेलिस पैटर्न रहेगा, बट मोस्टली इसका बेस्ट एग्जांपल इंडस को एक रिवर मिलती है सुरु नाम से लद्दाख में। ओके, बट वो परपेंडिकुलर पैटर्न क्रिएट करते हैं, तो दैट इज द ट्रेलिस पैटर्न। इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे? डेंड्रिक दिया, वो उल्टा कर देते हैं, इसको क्रॉस कर देते। देन व्हेन द रिवर discharge their water from all directions in the lake depression pattern is known as centripetal। तो ये देख लेना, ये मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, देखो या फिर माजिद हुसैन अगर किसी के पास होगा तो बस उसका जेरॉक्स लेना, फर्स्ट 2-3 पेजेस रिवर्स से उस पैटर्न का पूरा माजिद हुसैन ने है, ठीक है ना? तो बोलेंगे सर ने बताया था, जरूरत नहीं, उतना नहीं पढ़ना, तो उसकी इमेजेस के फोटो वगैरह निकाल लो, उसको देखो। चलो ठीक है। एंड अगर रिवर वेस्टर्न घाट के अगर मैं बोलता हूँ तो कौन से पैटर्न है? या यहाँ पे एक सेटलमेंट्स है, तो कौन से सेटलमेंट्स है? वेस्टर्न घाट के जो सेटलमेंट्स है
वेस्टर्न घाट से वेस्ट की तरफ कोंकण, कारवार एंड इवन मलबार, तो यहाँ पे कौन से सेटलमेंट से किस टाइप के लीनियर, ओके, so this is known as linear channel of the river which is parallel to each other and उसके accordingly settlements होते हैं उसके आमने सामने, so this is known as linear settlements, even national highway वगैरह होते हैं उसके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, about गंगा सिस्टम, इनकरेक्ट है ना, it rises in the Gangotri glacier near Gomukh in the Uttarkashi district of, ज्यादा पूछ गया ऊपर गए, उत्तराखंड, right, so that is Uttarakhand. नेक्स्ट, वैसे गंगा तो डायरेक्टली आती नहीं है ना, मतलब वो पूरा चैनल देखना उसका, पंचप्रयाग तो देख लेना, क्योंकि अभी न्यूज में चल रहा है मंदाकिनी, धौली गंगा भी न्यूज में है, जहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ ना, तपोन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट पे अफेक्ट हुआ था, राइट, तो अब ये बहुत करंट चल रहा है। लैंडस्लाइड पे लास्ट ईयर मीन्स क्वेश्चन है, इवन लैंडस्लाइड पे इवन 2020 में 2 क्वेश्चन थे, इस साल 1 क्वेश्चन था, ये सब कहाँ पे चल रहा है, इधर ही चल रहा है, चारधाम परियोजना भी इधर ही है, ये सब गंगा एंड उसके एंटायर सिस्टम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, so please check this region, okay, तो ये पहला क्या है, रॉन्ग है। सेकंड, देवप्रयाग भगीरथ मीट्स दी अलकनंदा, ट्रू, thereafter it is known as यमुना, सही है, देवप्रयाग ना, तो यहाँ पे कौन सी आती है, अलकनंदा एंड भगीरथ मीट होता है, और इसके बाद इसको क्या कहा जाएगा, गंगा, ओके, तो ये भी गलत है ना एक्चुअली, एग्जैक्टली इट इज रॉन्ग, ठीक है, देखते हैं। चलो, अलकनंदा हैज इट्स ट्रू सोर्स इन द सतोपंथ ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ, यस, बद्रीनाथ के पास, अलकापुरी के पास इसका ओरिजिन है, तो मुझे लगता है 3 करेक्ट है, यहाँ पे थोड़ा इशू नहीं है, but 3rd is correct, 3 should not be there. इनकरेक्ट पूछा है ना आपके, इसमें क्या है, 1 and 2, क्योंकि पहला भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो यहाँ पे गौमुख उत्तराखंड है, उधर के आपके इधर हिमाचल है ना, तो 1 and 2 चाहिए हमें। सी क्या आपका ऑप्शन, ठीक, तो ये मैं बोलता हूँ टीम को, ठीक है, 1 and 2 सी, हाँ, अरे बाबा, गंगा कहेंगे ना उसको, गंगा गंगा, ठीक है, गंगा बोलेंगे ना उसको, यमुना मतलब वो आती है सेपरेट उधर से, बंदरपुर पिक, यमुनोत्री ग्लेशियर, देन इट फ्लोज टू मसूरी रेंज, हिमाचल है ना, लबासना, उधर यमुना, ठीक है, यमुना एंड टोन्स आते हैं वहां पे लबासना के पास से, फिर वो एंटर करेगी हरियाणा एंड यूपी बॉर्डर, देन दिल्ली, देन आगरा एंड देन प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, तो ये यमुना है, यमुना, बाकी ये ऐसा कोई मिलता नहीं है। चलो गुड, नेक्स्ट, जाना है ना लबासना, तो अभी टाइम है, अभी ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से दो, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतने आपके एरर्स मिनिमाइज हो गए, जितने एरर्स मिनिमाइज हो गए तो उतना पॉसिबिलिटी, बिकॉज देखो यूपीएससी में बताता हूँ, आप कितने भी टेस्ट दे दो, यूपीएससी बहुत आगे की बात है, मतलब वो बहुत पहुंच चुके हैं, लिटरली ऐसे स्टूडेंट्स है 200-400 टेस्ट देके बैठे, बट कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्योंकि तो भी 5-10 बहुत हो गया, 90% पेपर इज लाइक बाउंसर, ठीक है, वहां पे जाके आप क्या सोचते हैं, वहां पे जाके क्या करते हो, हमारे लिए भी बहुत नए क्वेश्चन होते हैं, बट दैट टाइम एलिवेशन वर्क्स, और जो अपनी ये प्रैक्टिस की थी वो वर्क करेगी, सो इसलिए ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन, एंड टेंशन नहीं लेना है कि मेरा ये पार्ट रहेगा वो रहेगा, इट्स ओके, इट हैपेंस, वैसे भी कुछ भी कितना भी पढ़ के जाओ वो एग्जाम में नहीं आता है ना, मतलब तो ठीक ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, डेफिनेटली पढ़ना है, बिकॉज बेस है ना, हमारा थिंकिंग का बेस मतलब हमारी पढ़ाई है, दैट इज द पॉइंट, ओके, सो आवर प्रिपरेशन बेस इज दैट, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप प्रिपरेशन जो है तो वो ठीक है, नॉर्मली चलने दो, रिवीजन इज नेसेसरी, डेफिनेटली 2 से 3 बार 4 बार तो भी, इसके बाद आज से लेके
3 से 4 बार रिवीजन तो आपको होना ही चाहिए एवरी बुक, इवन योर मंथली मैगजीन्स, करंट अफेयर्स, व्हाटएवर इट, बट द इम्पोर्टेंट इज टेस्ट सीरीज ऑल्सो। ओके, तो टेस्ट सीरीज बहुत सीरियसली लेना है, एक एक क्वेश्चन पेशेंटली सॉल्व करना है, वही आपके स्किल्स जैसे डेवलप हो जाएंगे, तो आई थिंक कि मतलब काम बन जाएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग द टेस्ट। गिव मैक्सिमम टेस्ट सीरीज, जितने टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो उतना ही सबसे की बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में कब डिस्कस करेंगे। और इसका क्या आंसर होगा? 1 2 3, इज दैट करेक्ट? Subsidence of the western flank of the peninsula leading to the submergence below the sea during early tertiary period. Yes, जब Indian plate collapsed with the Eurasian, then this subsidence happened. जो ये subsidence हुआ था ना, कोंकण वगैरह जो पार्ट है वेस्टर्न घाट का, ये टर्शियरी पीरियड में हुआ था। और टर्शियरी पीरियड में क्या क्रिएट हुआ था आपका? हिमालय। तो दैट टाइम exactly this happened. It is a Cenozoic period. Cenozoic में हुआ। Cenozoic means recent period. इससे वेस्टर्न घाट बोल सकते हैं कि हम, ये सही बात है। तो इसी पीरियड में वेस्टर्न घाट क्रिएट होता है, एंड ईस्टर्न घाट आल्सो, इज दैट करेक्ट? ईस्टर्न घाट भी यही पीरियड में क्रिएट हुआ। ईस्टर्न घाट किस प्रकार का माउंटेन है? वेस्टर्न घाट कौन से टाइप का माउंटेन है? टाइप जैसे ये फोल्ड है, विंध्य सातपुड़ा इज ब्लॉक, अरावली इज ओल्ड फोल्ड, देन वेस्टर्न घाट हाँ नाम होगा ना उसको। Usually ये completely different topography, but usually we call it as a block because it is a right host, right? अगर कोंकण से देखते हम तो ये host जैसे दिखता है। तो basically ये host जो feature create होता है host and graben, so this is the form of block mountains. Okay, तो block mountain basically block होगा। And Eastern Ghat same है क्या? No, Eastern Ghat is old mountain, ये बहुत कम लोगों को पता है। Eastern Ghat is old mountain, almost contemporary to Aravalli, मतलब not exactly but almost contemporary to Aravalli. So should I say this both is water divide? ये दोनों भी water divide बोल सकता है? नहीं, Eastern Ghat नहीं, सह्याद्री जो होगा तो वो वेस्टर्न घाट जो पार्ट है, तो बेसिकली इट इज टाइम ऑफ टर्शियरी पीरियड है। टर्शियरी पीरियड में डाउन रैपिंग हुआ। वैसे ये भी तो ओल्ड ही है, साल अगर देखा जाए तो 50 लाख टू 1 करोड़ ईयर का हमारे लिए तो ओल्ड ही है ना, 1 करोड़ साल पहले। बट एज पर द एज ऑफ माउंटेन्स, तो डेक्कन प्लेटू कब क्रिएट हुआ? इन मेसोजोइक पीरियड। मेसोजोइक मींस 20 to almost 35 करोड़ ईयर्स बैक, 20 से 35 करोड़ ईयर्स बैक, अराउंड दिस, मतलब इससे ही ज्यादा भी रह सकता है। तो वो टाइम पे डेक्कन क्रिएट हुआ। सो बेसिकली डेक्कन इज ओल्ड कंपैरेटिवली, राइट? सबसे पहले कौन आता है? आर्कियन पीरियड, आर्कियन रॉक सिस्टम, देन धारवाड़ मींस कर्नाटका, देन कडप्पा सिस्टम, देन उसके बाद क्या ले सकते हैं हम? यस, दैट इज विंध्य वगैरह पार्ट क्रिएट हुआ। ओके, उसके बाद फिर हम ले सकते हैं कि फिर इंडियन प्लेट नाउ कोलैप्स विद द यूरेशियन, देन हिमालय, एंड साथ ही साथ फिर उसके साथ कंटेम्परेरी कौन क्रिएट हुआ? वेस्टर्न घाट फॉर्मेशन। तो अगर आप रॉक का एज बोल रहे हो तो ये सह्याद्री विल बी ओल्डर कंपैरेटिवली, बट फॉर्मेशन वाइज अगर बोलते हो तो देन इट इज कंटेम्परेरी टू हिमालय फॉर्मेशन, बिकॉज व्हेन इंडियन प्लेट कोलैप्स विद द यूरेशियन, दैट जर्क है ना सबसिड्स द वेस्ट कोस्ट, एंड दैट टाइम ही फिर वेस्टर्न घाट सह्याद्री। ठीक है, और बट वो सब छोड़ दो, अभी आते हैं ईस्ट घाट पे। ईस्टर्न घाट का फॉर्मेशन क्या है? ओल्ड माउंटेन, बट इट इज ओल्ड फोल्ड। ओके, प्लेस्टोसिन पीरियड्स में था, इट इज अ ओल्ड फोल्ड, याद रखिए ओल्ड फोल्ड। ठीक है, ऑलमोस्ट कंटेम्परेरी टू अरावली। गॉट इट? चलो ठीक, इसको बाद में चेक कर लो, बहुत ज्यादा मैं डिटेल नहीं बता सकता हूँ, टाइम का इशू है। चलो नेक्स्ट है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? स्लाइट टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुला ब्लॉक फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन गिव द ओरिएंटेशन टू एंटायर ड्रेनेज सिस्टम। सही बात है ना? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेस्ट टू ईस्ट जो फ्लो थे, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस। ठीक है, एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस? ये तीनों भी स्टेटमेंट अगर आप ठीक से पढ़ो ना, तो आपको कंटेम्परेरी नेचर समझ में आता है, दोनों कैसे साथ वाले एज, वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू with respect to the tiltation and Himalayas. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्लाइमेट के डिटरमिनेंट फैक्टर्स में से लैटिट्यूड है ना, बिल्कुल। हाई लैटिट्यूड लो लैटिट्यूड में क्या फर्क होता है? इक्वेटर के नियर बाय है तो लो लैटिट्यूड, अवे फ्रॉम द इक्वेटर हाई लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड डिफाइंस द टेम्परेचर आल्सो, ऑब्वियसली। हिमालय माउंटेन, यस, अल्टीट्यूड्स, यस, अल्टीट्यूड इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, तो क्लाइमेट भी डिफरेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, यस, कोस्टल रीजन के पास वेरिएशंस आता है। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटलिटी, जितना अंदर जाओगे उतना ड्राई एंड कोल्ड मिक्स होगा। एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर वहां पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जितना कॉन्टिनेंटलिटी इंक्रीज होगी, जितना कोस्ट के पास जाओगे इट विल बी मिनिमम। अपर एयर सर्कुलेशन, लो प्रेशर होता है अपर एयर सर्कुलेशन से पॉसिबल। इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स, इस कहीं ना कहीं क्लाइमेट पे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ITCZ, incorrect. It is dynamically induced. Is that correct? No. Because देखो ITCZ मतलब क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, नाम में ही सब कुछ है। इंटरट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक के बिटवीन जो एयर है उसका कन्वर्जेंस जोन। देखो कन्वर्जेंस जोन मतलब क्या होता है? लो प्रेशर, सही है। लो प्रेशर में एयर का क्या होता है? कन्वर्जेंस होता है, राइट। और डाइवर्जेंस में क्या होता है? मतलब हाई प्रेशर में क्या होता है? डाइवर्जेंस, राइट। तो बेसिकली हाई प्रेशर इज डाइवर्जेंस जोन एंड कन्वर्जेंस मींस लो प्रेशर जोन। तो इक्वेटर पे क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंस। बट ITCZ थोड़ा फ्लक्चुएट करता है बिकॉज़ अर्थ इज टिल्टेड। सनरेज थ्रू आउट द ईयर सेम होते हैं क्या? नहीं होते हैं। समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस पड़ा होगा आपने, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दैट ITCZ फ्लक्चुएट्स। तो ITCZ का मीन तो बदलता नहीं है कि ट्रॉपिकल मतलब 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के हाई प्रेशर से विंड्स कहां पे आते हैं? टुवर्ड ITCZ, वहां पे आके कन्वर्ज होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई ITCZ इज नॉट डायनामिकली, इट इज अ थर्मली इंड्यूस्ड। ये लो प्रेशर क्या है? थर्मली इंड्यूस्ड है। अभी देखो इसमें थर्मल और डायनामिक दो पॉइंट्स होते हैं। थर्मली मींस व्हाट? थर्मली मींस व्हाट? ड्यू टू टेम्परेचर। तो ऐसे कौन से दो बेल्ट्स हैं? इक्वेटर का लो प्रेशर मींस ITCZ बेसिकली, एंड अनदर इज द पोलर। एंड डायनामिकली इंड्यूस्ड कौन सा आता है? 30 डिग्री नॉर्थ। ये डायनामिक में कौन सा आएगा? 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ प्लस 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। वैसे तो 60 डिग्री तो लो टेम्परेचर है, तो हाई प्रेशर चाहिए था देखा जाए प्रैक्टिकली। 30 डिग्री पे हाई टेम्परेचर है, बट चाहिए क्या था? सॉरी, हाई टेम्परेचर है तो कौन सा चाहिए था? बेसिकली हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर चाहिए, बिकॉज एयर हिट्स एक्सपांड्स एंड बिकम्स लाइटर एंड गो अपवर्ड्स। तो लो प्रेशर चाहिए था बट है वहां पे हाई प्रेशर। तो ये क्या है? डायनेमिकली इंड्यूस्ड। वो थोड़ा सा कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है। बट याद रखना 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन एंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ सब पोलर लो प्रेशर जोन्स इज नोन एज डायनेमिकली इंड्यूस्ड। एंड थर्मली मतलब कौन से? इक्वेटर लो प्रेशर जोन या ITCZ एंड पोलर हाई प्रेशर जोन 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। डायनामिकली नहीं। एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस? फास्ट, इसमें कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, डन। और देखो किसी को मतलब यहाँ पे ये नहीं करना है कि सोचना नहीं कि मैं पूछ सकता हूँ, बिल्कुल पूछना है। किसी को घर पे लेके जाना है कि आपको इसमें से नहीं है ना? हाँ, मतलब क्या करना है उससे क्या लेना देना है? मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन। वो क्या सोचता है वो उसका प्रॉब्लम है। मुझे जो प्रॉब्लम है वो मुझे पूछना है। तो बेसिकली किसका कुछ सोचना नहीं। बी सेल्फिश इन दिस एग्जामिनेशन। जो मेरे काम का है वो मुझे पूछना है, ठीक है। और अननेसेसरी है तो वो अननेसेसरी है, उसको स्किप करना है। तो इसलिए बिल्कुल डरो मत ऐसा। और यही टाइम है, बाद में कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाद में आप बोले बाद में पूछेंगे, कौन मिलने वाला आपको बाद में? ठीक है, गूगल करोगे 10 चीजें, 10 कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, उसमें भी टाइम निकल जाएगा। तो इससे बेहतर है क्लास में पूछना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 देखो। El Nino is the non-cyclic events which follow a definite temporal scale. ओके, तो डेफिनेट नहीं है ना, ये फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स वेदर वंस इन 3 to 7 years, तो ये फ्लक्चुएट कर सकता है। इसलिए इसको डेफिनेट बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, राइट। द प्रेजेंस ऑफ एल निनो सर्टेनली लीड्स टू ड्रॉट इन इंडिया। ओके, ठीक है। तो मतलब नॉट ऑलवेज, क्योंकि अभी इसके कनेक्शंस भी ऐसे प्रॉपर नहीं, बट व्हाट रेनफॉल कंडीशन डिक्रीज तो कर सकता है।
अब इन्होंने क्या दिया? ठीक है वही, हाँ वही सही बात है। तो नॉट नेसेसरी ऑलवेज, ओके, इनका वही इंटरप्रिटेशन वही है कि नॉट नेसेसरी ऑलवेज, क्योंकि रिपोर्ट्स भी अभी आ चुके हैं बहुत सारे कि ऑल एल निनो ईयर्स मस्ट नॉट बी कनेक्टेड विद डॉट सिचुएशंस ऑफ इंडिया, ओके। तो यस, मतलब मुझे लगा कि एनसीईआरटी के बेस पे तो उस लेवल पे सोच रहा, बट यस इट इज आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट थर्ड, एल निनो इज merely extension of the warm equatorial current, okay, and which gets the replaced temporarily by the cold Peruvian currents, है ना। तो पेरू के पास क्या होता है, यूजुअली कौन से करंट्स होती है, कोल्ड होती है, तो बट वहां पे अभी हमोल्ड वार्म करंट बन जाती है, तो फिर यहाँ पे पेरू के पास लो प्रेशर बनता है, ये रिप्लेसमेंट वहां पे हो जाता है, रिवर्सल ऑफ द विंड्स होता है, so that is correct। तो आंसर विल बी 3। ठीक है, वो हम कभी करेंगे बाद में डिस्कस अबाउट द टाइप्स। नेक्स्ट, ब्रेक इन मॉनसून। If rain fails to occur for 1 or more week, it is known as break in the monsoon. Usually अगस्त में अगर ऐसा होता है तो कंसिडर किया जाता है ये मिड ऑफ द जुलाई, जून मंथ, and it happens due to weakening of the low pressure। याद रखना, ऊपर जो लो प्रेशर वो अगर वीक हो जाता है, या STWJ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इफ री अराइव्स इन इंडिया, देन मॉनसून ब्रेक पॉसिबल है। या इवन MJO नाम से सिचुएशन आती है, मीडियम जुलियन ऑसिलेशन, तो वो अगर आता है तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकता है ब्रेक का। तो लिख के रखो बस फिलहाल के लिए, ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट आप लिख के रखो कि ब्रेक इज पॉसिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, MJO मीडियम जुलियन ऑसिलेशन, एंड सेकंड weakening of the ITCZ, weakening of the ITCZ, weak होना, ITCZ weak होना, okay, या STWJ re-arrival of the STWJ to the north of India। What is STWJ? Subtropical westerly jet when re-arrives in north of India, then it weakens the low pressure because it reduces the temperature of that area। So that's why वो low pressure weak हो गया, तो फिर वो इंडिया में मौसम कुछ कर पाएगा क्या, कूल कर पाएगा क्या, यहाँ पे नहीं कर पाएगा। So that's why re-arrival of STWJ in north of India is another reason, and MJO medium julian oscillation is another reason। Got it everyone? ये दो लिख के रखो, आराम से पढ़ो इसको, फिर देख लेना। All of the is correct। Next, Tamil Nadu coast dry during this season. What are the factors responsible for this? मतलब monsoon ना, onset। It is situated parallel to the Arabian Sea branch। तो पैरेलल कौन सा हो गया, तो ये वाला गेटिंग मार्क। It lies rain shadow area of the Bay of Bengal branch of the southwest monsoon, okay। अच्छा, रेन शैडो की बात है, तो रेन शैडो विल बी yes Arabian Sea branch, बट ये क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्म नहीं है, तो डेफिनेटली बिकॉज क्या है ना कि इट इज डिसेक्टेड टोपोग्राफी। अन्नमलाई कार्डमम, सिरुस मलाई पलानी, विच इज डिसेक्टेड। अगर आप इसको प्रॉपरली देखो तो नीलगिरी के बाद कौन है, अन्नमलाई, अन्नमलाई के बाद कौन है, कार्डमम, इसमें गैप है। सो विथ रिचार्ज दे कैन रीच अप टू द तमिलनाडु, अप टू द कावेरी ऑल्सो। तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ रेन शैडो यहाँ पे क्रिएट नहीं होता, ओके, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये स्टेटमेंट तो नहीं। ये रेन शैडो किसको बोल सकते हैं हम, वेस्टर्न घाट सह्याद्री का ईस्ट पार्ट, मावळ रीजन, मराठवाड़ा फॉर एग्जांपल, ज्यादा ही एक्सटेंड करना है, या कर्नाटक का मैदान रीजन, राइट, मलनाड रीजन है मैदान का कर्नाटक का, और उसका ईस्ट कौन है, मैदान रीजन। मलनाड और मैदान में क्या फर्क है, कर्नाटक में जो वेस्टर्न घाट पार्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं वो लोग, फॉरेस्टेड पार्ट को, हिली सेक्शन को मलनाड, मलनाड याद रखना, ये पूछे जाते क्वेश्चन। और उसके ईस्ट में जो प्लाटू का सेक्शन, रोलिंग प्लाटूस कहा जाता है, रोलिंग प्लाटूस टू द ईस्ट ऑफ
this Baba Budan or Western Ghat or part of Karnataka. So this plateau, Dharwad plateau basically is known as Maidan. इसको बोलते हैं मैदान. तो ये रेन शेड्यूल फिट के अंदर आ जाए. समझ पा रहे हैं? तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं. ठीक है. बट नीचे जैसे जाओगे तो देयर इज नाउ डिसकंटिन्यूटी. जितना डिसकंटिन्यूस उतना बेटर होता है. उतना वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल. जैसे गारो खासी जैतिया, उसमें क्यों रेन शेड्यूल नहीं क्रिएट होते ऊपर? क्योंकि गारो खासी जैतिया इज डिसकंटिन्यूस, सो दैट रेनफॉल कैन रीच अप टू द द्वार्स आल्सो. दिस अरुणाचल आल्सो. सो देयर इज अ टी फॉर्मेशन. टी के लिए बेस्ट नाउ से तो बहुत कनेक्शंस है. कोई कंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस है तो कैसे इफेक्ट होता है. ओके, चलो नेक्स्ट 98 हो गया. लास्ट 2 बाकी. आई नो आप कब से आए हो? सुबह. ठीक है ना, ज्यादा नहीं हुआ. अच्छा, खाना मिस हो गया. मैं भी सुबह से 8 बजे से लेक्चर ले रहा हूँ. नॉन स्टॉप चल रहा है. एंड वीकेंड बैच है कोई, वो भी अभी लेक्चर वो लेके इधर जस्ट पहुंच रहा हूँ. बट होनी चाहिए ना एनर्जी, सब में होनी चाहिए. निकालनी ना एग्जाम. ठीक है, इसलिए रखो एनर्जी, रखो. बहुत काम किया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, बिकॉज पुश करो ना, अपने लिमिट्स पुश करने ही चाहिए ना. ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं ना, तो ब्रेक करते हैं ना खुद के पॉइंट्स को, उसमें अलग मजा होता है. नहीं आ रहा तो ले लो मजे, क्योंकि उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है. एग्जाम निकालने बोलिए सर कुछ भी बता रहे हैं, बट लेना पड़ेगा मजा, उसके अलावा क्या होगा. ठीक है, चलो बढ़ो आगे. तो एएस किस में आता है? जैसे कोपेन के द्वारा एएस एएम एडब्ल्यू. तो एएस मतलब क्या है? थोड़ा सा कोरोमंडल अगर ले सकते हैं, मॉडरेट रेनफॉल. एएम मींस हेवी रेनफॉल. एएम मींस वेस्टर्न घाट इज नोन एज एएम. एडब्ल्यू मतलब जो मराठवाड़ा वगैरह वो पार्ट्स है एडब्ल्यू. एडब्ल्यू मतलब लेस रेनफॉल और एएस मींस मॉडरेट. ओके, देख लो कोपेन की क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, एएस वगैरह मिल जाएगा. इधर एएम डब्ल्यू एक्सेट्रा. एंड बीएस वगैरह राजस्थान में ड्राई सेक्शंस, ड्राई स्पेसेस भी. चलो सेकंड लास्ट. In ancient times, soil used to be classified into 2 main groups, Urvara and Usara, which were sterile and fertile. Usara is not fertile. Okay, Usara मतलब क्या है कि जो saline शार्पट बोलते हैं ना, इसको saline alkaline बन चुकी है, तो उसको कहते हैं Usara soil, which is not good for this part. So it is wrong. It is not fertile. Urvara and Usara है, but which is fertile is the Urvara and second is the sterile. तो Usara is sterile. ये उल्टा कर देंगे बस, बाकी कुछ नहीं. ठीक है, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट. दामोदर वगैरह दिया है, सॉरी सर, फैक्चुअल पार्ट. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. इनकरेक्ट. The alluvial soil vary in nature from sandy loamy to clay. But they are generally rich in phosphorus but poor in potash. ठीक है, तो phosphorus कम होता है इसमें. ठीक है, so they are rich in phosphorus but poor in phosphorus and rich in potash. देख लेना, सॉइल बाद में करना. नाइट्रोजन कंटेंट भी एल्यूवियल सॉइल में कम होता है. चलो, थैंक यू लवली. नेक्स्ट टेस्ट का भी आपके अभी नेक्स्ट संडे. सब्जेक्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी ना. ठीक है, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी. ठीक है, मैपिंग अच्छे तो ना, मैपिंग नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, मैपिंग क्वेश्चन विल बी देयर. ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.